required in the present security environment, where the province of Khyber Pakhtunkhwa is facing peculiar security environment every day, and where the law enforcing agencies are very particular about security plans, especially regarding public gatherings in Peshawar, which have faced attacks on LEAs and others, leading to significant loss of property. It is, however, noticed that no response has still been received, and therefore not even the initial work for a security plan has been started. My Lord, we therefore write to them, next page, that they should on immediate basis provide us. And then if your Lordship may see the next letter, it goes from the Election Commission of Pakistan on 30th November, page 96 and 97. I'll read two letters. 97, if your Lordship may proceed to immediately. I am directed to refer to the Honorable Election Commission of Pakistan dated 30th November 2023 on the above referred subject, and to state that in order to comply with the directions of the Election Commission of Pakistan, the following information may please be provided to make necessary arrangements for peaceful conduct of said election. 1. Venue. 2. Expected start and conclusion time. 3. List of polling staff. 4. List of participants. वो venue की बात है. जी sir. Venue right at the top. Number 1 we say tell us where the venue is. जवाब मिला आपको इसका? No sir. We got no reply to this letter. तो देखिए, एक तो बात है ना, सरकार चले वो कहेंगे जी सरकार तो छोड़ो, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मगर मेंबरान को तो पता होना चाहिए ना कि मैं जाके कहाँ वोट डालूं अपना, उनको तो पता हो. आप अपने वक्त पे जवाब दीजिए ना. हम सवाल आपसे पूछ चुके हैं मगर आप जवाब नहीं दे रहे ना. बहस ना कीजिए. हमने सिर्फ एक मामूली सा सवाल पूछा है. कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे? ये तीसरी बात है बस. अब आपकी आवाज माइक पे आ जाइए ना. कोर्ट ही कंसर्न थे कि आपको तो अपने मेंबर्स को, कि हमें पता था कि भाई अगर आपका मिसाल के तौर पे मेंबर ये बैठा हुआ है, वोट डालने जाना चाहे तो उसको पता तो होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँ वोट डालने. तो हमने व्हाट्सएप के जरिए बता दिया था कंसर्न जो ड्यूटी लगाई गई थी असिस्टेंट कमिश्नर. ये आप किधर बात कर रहे हैं कि हमारा, और वहाँ लोग पहुंचे. नहीं, आपके हर सूबे में आपके मेंबर्स हैं ना नियाजी साहब, आपके हर सूबे में मेंबर्स हैं ना जी. आपका जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो तो हर जगह से, सूबे से भी लोग आने थे ना. तो अगर आप पेशावर में एक अननोन प्लेस पे कोई इलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सिंध के लोगों को भी आना है वोट डालने, पंजाब के भी आना है और बलूचिस्तान से भी आना है. अगर आप चलाएंगे वीडियो मैसेज. नहीं, मैं वीडियो से नहीं. आप वीडियो की बात नहीं, आप ये वीडियो की बातें छोड़ दें. तरीक़ेकार से हम वीडियोस पे केसेस नहीं चलाते हैं. हम केसेस जो हमारे सामने चीजें होती है उस पे चलाते हैं. ये आप लोग वीडियोस बाहर जाके जितने मर्जी चला लें. उस दिन अगले दिन भी हमने यही बात की थी किसी केस में कि भाई ये हम आईनी अदालत है, कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इतना आपके तहरीरी तौर पे है या नहीं है, बस खत्म. इलेक्शन कमीशन से भी जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना उसमें वो आपसे पूछ भी रहे हैं और आप लिख नहीं रहे. वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए कि आप उनको इंटीमेट करें. पूरे पेशावर में वो सिक्योरिटी आपको देंगे या सिर्फ एक जगह पे देंगे? क्योंकि जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, केपीके पेशावर, कोई वेन्यू नहीं है. अब वो आपसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि किधर सिक्योरिटी फराम करनी है. तो पूरा पेशावर में फिर कहीं भी इलेक्शन हो रहे होंगे. इसका मतलब है कि अगर कोई आपने जाके चमकनी में कर लिया, आप ना मांगते हो सिक्योरिटी, या आपका अपना वो है. अगर ये 30 नवंबर को आप कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट द वेन्यू ऑन पोलिंग डे. चलिए खैर, आप सोच लीजिए, बाद में बता दीजिएगा. जी भाई आप सिंपल जवाब कर रहे हो. आप हमसे पूछ रहे हैं मौजूद है. हमने व्हाट्सएप कर दिया इलेक्शन कमीशन से. भाई ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं. हमने उनको तहरीरी हम आपको दे देते, इनको भी दिया हुआ, इनके पास मटेरियल है. हमने पेशावर कमिश्नर और पुलिस को कहा आपकी अगर सिंगल पैनल आया, मेंबरशिप कितनी है आपकी? हमने उनको कहा मेंबरशिप कितनी है आपकी? 8,37,950. ये आपके रजिस्टर्ड, ये मेरे रजिस्टर्ड मेंबर है, वोटर है और डेटा भी मेरे पास है. 8 लाख को पता होना चाहिए था या नहीं कि इलेक्शन पूरे मुल्क को पता था, हर जगह पता था. प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. अच्छा आप रहने दें. अभी अब हम आपसे एक छोटी बात पूछ रहे हैं, वो उसका सिर्फ जवाब दे देना. बहस आपकी सुनेंगे. यस, चले आगे बढ़िए मखदूम साहब. एक हमारा प्लीज ठहर जाइए ना. एक ऑब्जेक्शन आप प्लीज हम इनको सुन लें ना. इन्हीं पे ऑब्जेक्शन ना सर.
بھئی آپ اگر ہر وکیل بحث کرے گا تو ہم کسی کو نہیں سن سکیں گے. سینئر وکیل بیٹھے ہیں, کم از کم ان سے اجازت تو لے لیجئے. یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کے اپنے وکیل ہیں. میں نہیں آپ سے سنوں گا. بھئی آپ کے جب سینئر وکیل موجود ہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ تو پارٹی ہیں نا, آپ آج ہمارے سامنے وکیل کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہیں. یو آر اے ریسپونڈنٹ. ٹھیک ہے, آپ الیکشن کمشنر ہیں, سارا الزامات آپ کے سر پہ ہے. تو آپ آج وکیل نہیں ہیں. یا تو آپ کہیں کہ میں اپنی وکالت کر رہا ہوں, وہ الگ بات ہے. آپ کے وکیل کون ہیں؟ آپ کے وکیل کون ہیں؟ حامد خان صاحب ہیں. تو پھر وہ موجود ہیں. شکریہ. My Lord, I was reading to your Lordship from page 55 of the order of the Election Commission, and if your Lordship turns... یہ طریقہ کار ختم کر لینا ان کا آئین میں, جو ان کے آئین میں اندراج ہے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ My Lord, that was... Federal Election Commission is provided. ان کا جو آئین میں جو آپ پہلے کچھ کلوزز پڑھ رہے تھے 5 پوائنٹ, تو اس میں اور کچھ طریقہ کار ہے یا بس یہ ہے؟ Sir, page 140 I was reading to your Lordship. نامینیشن فارم کا کوئی طریقہ ہے, مینشنڈ ہے, کیسے ہونا چاہیے؟ It doesn't go into that many details, but if your Lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, جی, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. یہ ریلیونٹ کلوزز بتائیے کون سے ہیں؟ یہ سر آگے آتے ہیں. اگر آپ سر آگے دیکھیں دین on page 142 نامینیشن فارم کو بھرنے کا کیا طریقہ ہے, وہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے یا کوئی الگ سے رول ہے؟ No sir, it's not there. How the nomination form will be given to the... نہیں مطلب وہ جو اگر کوئی کلوزز ہے بتا دیں, نہیں تو آگے بڑھتے ہیں پھر ہم. جی سر. Sir, the organization is given, sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your Lordship will see, thereafter there is the Election Commission is mentioned, and if your Lordship sees یہ تو سینٹرل آرگنائزیشن صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتا دیں طریقہ کار کیا. یہ ایک پڑھ لیے پیج 90 پہ میرے خیال ہے ان کا ہے, یہ 192 my lord. نو 90 پہ یہ کہیں ان کے کانسٹیٹیوشن میں نامینیشن فارم کا حاصل کرنا اور اس کو جمع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا سر. اب پیج 90 پہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا لیٹر لگا ہوا ہے پیج 90 پہ, یہ ان کا الیکشن شیڈیول ہے جو جاری کر رہا ہے فیڈرل الیکشن کمیشن, اس پہ نیاز اللہ خان نیازی صاحب کی سائن ہے. اب اس میں دیکھیں نا, نوٹس انوائٹنگ نامینیشن پیپرز فرام PTI ممبر 29/11/2023. رائٹ. یہ لیٹر ایشو بھی 29/11 کو ہی ہوا ہے ان کی سگنیچر سے. Nomination forms to be received by returning officers, appeals against objections, display of names. نہیں تو یہ نامینیشن پیپر کا کوئی وہ ہے فارمیٹ یا کیا اس کو کہتے ہیں, پرو فارما؟ Sir, it's not there in the constitution, it's not there in the rules issued by the election commission. But what about where is this letter? Because اس کے اندر یہ مینشن ہے نا, پروسیجر پورا انہوں نے کیا ہوا ہے نا. جی سر. اپیل اگینسٹ آبجیکشنز اور ریجیکشن آف نامینیشن فارم, ڈسپلے آف نیم آف کنٹیسٹنگ پینل, پولنگ ڈے ایٹ پشاور خیبر پختونخوا. یہ ریٹرننگ آفیسرز کون تھے؟ نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیوڈ بائی ریٹرننگ آفیسرز. The returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, ایک سینٹرل الیکشن ہے, ایک پروونشل بلوچستان, KPK پنجاب اینڈ سندھ, اس کے لیے 4 الگ الگ 4 ہیں سر. پھر اگر آپ اگلا صفحہ دیکھیں گے سر, تو presiding and assistant presiding officers are nominated. They are 10 in number. یہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگوں نے کنٹیسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یا فارم داخل کر کے ودرا کر لیا تو انوپوز آ گئے, جو نارملی ہوتا ہے نا کہ آپ ودرا کر لیتے ہو کہ ٹھیک ہے I will not contest. Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें.
withdrawal कहाँ है हमारे पास नहीं ये we don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया announcement कहाँ जी So, my lord, these are there. Then, if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. Sikandar, you have taken my book, yeah? That's so good. My lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioner. बात कर चुके हैं सर अगर आप रिपीट ना करें कुछ नहीं सर ठीक है अगर आप सर पैराग्राफ 2 ऑनवर्ड्स देख लें and then the functions and then paragraph लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके इस इलेक्शन से पहले ये कौन से इलेक्शन PTI के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए हैं 2017 ये डेट 19th June 2017 19 जून 8 जून तो ये कह रहे हैं 22 को हुए आप कह रहे हैं 17 में हुए हैं what happened was नहीं वो दिखाइए हमें रिकॉर्ड से बताइए my lord the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the election commission my lord the first order of the of the election commission deals with it and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file 428 ये क्या कह रहा है ऑर्डर Sir, if your lordship will see page 435 paragraph 424 paragraph just paragraph 24 just I'll read 5 lines and then I'll move on from here my lord we scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council as well as the alleged intra-party elections of various office bearers but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved and ever convened its meeting or on 10th of June 2022 at this juncture it would be pertinent to refer to various letters your lordship may different dates for that election. Each of these letters which are mentioned. Conclude क्या कर रहे हैं order क्या रहे हैं? Sir, different dates were given to them and. वो वाला portion पढ़ देना. My lord, I'll read. Concluding क्या कर रहे हैं? Letter dated 10th. Lenient view लेके इसमें उन्होंने कहा है कि वो तो eventually यही करते हैं. Paragraph 34 पढ़िए आखिरी paragraph है ना? जी sir. इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना? All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing Constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the election act 215(5) क्या है 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है सो देन you will be denied a symbol. That's one of the consequences. पढ़ते रहिए please. A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold elections. In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament.
ये चैलेंज हुआ ऑर्डर? Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड, In writ petition number 5791 of 2023. 5791 of 2023. ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given you, lordship, the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 811 of 2023. दोबारा कहिए, 81171 of 2023. जी, This, my lord, is at page 644 of your lordship's file. Part 3. Part 3. Yeah, that's that page. 644. 644. Copy वालों को ले रखा है। This is a copy of writ. Where is Yes, the my order? lord. Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एडजेंट हुआ ये जी सर, ये पढ़िए ऑर्डर। Through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior to be heard with WP 332. This, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है? Page 2 of this order 656, इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा एक और केस के साथ WP. There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है दूसरा 8/12/2023 का कि ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड फ्रेश इलेक्शंस. ये सर ये 657 इसमें लिखा है ना बीच में व्हेन ये मैंने नहीं पढ़ा है. ये 657 सर. अच्छा, ये ऑर्डर तो फिर ये 15-12 का आपने पढ़ा है? जी सर, 8/12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है, इसमें भी WP 332 का जिक्र है. जी सर, उससे ऊपर जो लिखा है जी, when confronted with ये 332 WP क्या चीज है? Sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. अच्छा, ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके, जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है, वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट आप कह रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन, इनका कहना है कि ये 8/6/2022 के जो इलेक्शन थे इनके, ये सही थे. आपको कहना है ये इलेक्शन सही नहीं थे. उसके रिजल्ट्स क्या हैं? उसका सर, उसके नतीजे पे दे हेल्ड अनदर इलेक्शन. नतायज किधर है? कौन जीता? This is the election which that is the election which your lordship saw where everybody was नहीं, ये तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही है ना. मैं 8/6/2022 के इलेक्शन का पूछ रहा हूँ. वो नतायज कहाँ है उसके? आप सवाल समझ गए? They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they have. वो वही लोग हैं जो कि ये मौजूदा हैं या अलग लोग थे? My lord, I'll have we can check, but खान साहब आप बता सकेंगे, इस पर रोशनी डाल सकेंगे? जो 8/6/22 का जो आपका इलेक्शन हुआ था, उसमें इलेक्टेड कौन हुए? आप बकौले आपके कौन लोग इलेक्टेड हुए उनसे? 22 जो हुए, हाँ,
نہیں وہ فرق ہے جو موجودہ الیکٹڈ لوگ ہیں وہ پتہ نہیں یہ دے دیں میں بتاتا ہوں پارلیمنٹ میں پڑھے کہاں لکھا ہے وہ اس آرڈر میں لکھا ہے اسی آرڈر میں سر لکھا سر انہوں نے یہ الیکشن کرایا اینڈ دین مسٹر نہیں بے شک دیکھیے ہم آپ کو بالکل آپ کی بات جائز ہے ہم آپ کو وقت دیں گے مگر جیسے جیسے سوال اٹھتے جا رہے ہیں تو وہ آپ نوٹ کرتے جائیے یا پھر اگر آپ کے فوراً جواب ہے تو دے دیجئے کیونکہ یہ 3 والیومز انہیں فائل کیے ہیں ہمیں بھی بڑی دشواری ہو رہی ہے اس کو پڑھنے میں تو اگر کسی چیز کا جواب ہے تو دے دیجئے اگر جواب نہیں آپ لانا چاہتے ہیں بالکل آپ ضرور فائل کیجئے نہیں آپ نوٹ کرتے جائیے نا یہ چیز اب صرف ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو نتائج تھے جو 8/6/2022 کے الیکشن ڈیٹڈ اس میں پیج 412 پہ ہے 10 کو ہوئے 8 کو ہوئے ہمیں 10/6/2022 کے تھے نا آپ کے پچھلے الیکشن اس میں پیج 412 پہ ہے جناب پریئر میں ہائی کورٹ کی پریئر میں لکھا ہے 10/6/2022 4-1 ایٹ دیٹ ٹائم گوہر علی خان صاحب 4-1 چیئرمین گوہر صاحب تھے یہ جو آپ کا 412 یہ پیج 412 دیکھ لیجیے گا ہاں یہ آ گیا نا یہ تو کچھ اور ہے نہیں 412 سر یہ تو پڑھ دیں اگر آپ پارٹ 2 میں ہاں پڑھیے پلیز جی ریفرنس ویزبی لیٹر ڈیٹڈ سو جناب 412 پہ ہے جناب نہیں اگر الیکشن کی صرف ڈیٹ کا ایشو ہے تو وہ تو آپ کے 10/6/2022 کو ہوئے تھے وہ آپ کی پریئر سے پڑھ رہا ہوں آپ کی جو کچھ اور پریئر ہے نا الیکشن کمیشن کا جو پریئر ہے نہیں جواب نہیں جو آپ کی پریئر تھی ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے نہیں یہ کہا تھا کہ جو ہمارے پچھلے الیکشن 10/6/2022 کے تھے وہ ٹھیک تھے ان کو ویلڈ ڈکلیئر کریں وہ جو پٹیشن پینڈنگ ہے آپ کی ہائی کورٹ میں جو یہ مخدوم صاحب بتا رہے ہیں 5 ممبر کے سامنے جو تھا ایشو جی وہ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن نے اس کو انویلڈ ڈکلیئر کر دیا نا آپ نے فریش کرا لیے پھر اس کے بعد کروائے دوسرے یہ کیونکہ they gave us 20 days to do that so we had to do it within that prescribed time and we did it which they are challenging now ایک سیکنڈ میں ذرا بھی کنفیوز ہو گیا ہوں بقول آپ کے 10/6/2022 کو الیکشن ہوئے جی ان کا کہنا تھا وہ صحیح نہیں ہے جی ان نے آرڈر پاس کیا مگر وہ آرڈر آپ نے چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں آپ نے وہ آرڈر مانا نہیں پھر لیکن کمپلائی بھی کیا جی کمپلائی بھی کیا ہم نے اسی کے تحت تو پھر آپ کا کہنا ہے یہ جو پٹیشنز آپ کی جو فائلڈ ہیں وہ آپ نے وڈرا کر لی ہیں جو ہائی کورٹ میں پڑھی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں WPR1171 لیکن we have already complied with the order so therefore that becomes infructuous نہیں مگر کوئی اطلاع تو دے نا ہائی کورٹ کو جا کر کے سر جی ہے اس میں مینشن کی ہوگی آپ پیج دیکھیے پیج 657 پیج 650 میں آپ کا یہ 81171 آف 2023 یہ پٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ آپ سے پوچھا انہوں نے when confronted with the query that since inter-party elections of Pakistan Tehreek Insaf pursuant to impugn order dated 13 September 2023 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable اس پر آپ کے وکیل صاحب نے جواب دیا کہ یہ ابھی ہم اس کو already subjected to full bench of this court تو یہ نالج میں آ گیا ہائی کورٹ نہیں یہ پورا آگے لکھے submits Submit that this similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters. Proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. یہ ہوا ہے بس اس کے مجھے دیکھیں اب میں ذرا بالکل کنفیوز ہو گیا ہوں ایک الیکشن کمیشن نے آرڈر آپ کیا کب آرڈر ہے ان کا الیکشن کمیشن کا آرڈر مائی لارڈ 428 پہ جو پیج ہے اس کا تاریخ ہے 23/11/2023 یہ نہیں وہ جو ریٹ پٹیشن میں چیلنج کیا پہلا والا تو یہی ہے نا ڈکلیئر ہولڈ دیٹ امپیون آرڈر the matter was heard on 13th September ایک سیکنڈ آپ کا آرڈر کدھر الیکشن کمیشن کا وہ دیکھیں جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے page 428
428. This is the order passed on 23rd November 2023. 23rd November. یہ ڈیٹ کہاں لکھی ہے سر؟ ریٹ سے پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، پریڈ کلاز میں جو ان کی ہائی کورٹ میں ڈیٹ آف ہیئرنگ واز 13/9. ڈیٹ آف ہیئرنگ ٹوڈے، اناؤنس ٹوڈے. اس کی تاریخ کیا ہے اس آرڈر کی؟ اس آرڈر کی تاریخ سر 23/11 ہے. یہ 428 پہ لگا ہوا ہے. 23/11/2023 ہے. جی سر. اور نیچے انہوں نے سائن پہ ڈیٹ نہیں ڈالی ہے، بٹ وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ اوپر لکھا ہوا ہے. جی سر. تو انہوں نے ایک ساتھ آرڈر کو چیلنج بھی کیا اور ایک ساتھ انہوں نے الیکشن بھی کر لیا. یس بنا. یہ ہوا. یس سر. تو پھر انہوں نے یہ درخواست کیوں کی ہائی کورٹ کو کہ میرا یہ اس کو پینڈنگ رکھیں؟ وہ کہہ دیتے کہ جس کو ہم وڈرا کر رہے ہیں. They could have, but they... نہیں، مطلب مجھے اس کی ذرا لاجک بتائیے خان صاحب. وہ پھر اگر آپ الیکشن کروا رہے ہیں تو پھر اس کو آپ واپس لے لیں، بات کو ختم کریں. اس کو زندہ کیوں رکھ رہے ہیں پٹیشن کو، لاہور والی کو؟ To the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless elections. مگر وہ بیرسٹر علی ذرا CSK Gauhar will explain why that was. جی فرمائیے. The 3-through petition has actually been filed when Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI. And they were making that excuse. آپ دیکھیں نا، اب آپ نے آغاز ہی بات کا کنٹروورشل سٹیٹمنٹ سے کیا ہے. آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو پٹیشن آپ نے جو فائل کی تھی جب کیوں پینڈ ہو گئی، اس کو آپ کا کیا بنا؟ آپ نے اس کو زندہ کیوں رکھا ہے؟ یورانا وہ اس کے ساتھ کلب ہے، وہ سیم پٹیشن ہے، ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے کیونکہ اس میں چیئرمین نے الیکشن نہیں لڑا، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہم نے کلب کروایا کہ لیگل ایشوز پہ. یس 332 ہے. یس یورانا. خان صاحب مجھے بات سمجھ نہیں ہے، آپ مجھے سمجھا دیں. خان صاحب آئی ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ. ذرا مجھے نہیں، ذرا سمجھا دیں نا بات. ایک منٹ کی اجازت. ہم نے وہ پٹیشن اس کے ساتھ اس لیے کلب کروایا کہ جو آبزرویشن الیکشن کمیشن نے دی تھی. پہلے بتائیں 332 ہے کیا؟ 332 وہ پٹیشن ہے جس میں ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ریموول فرام چیئرمین شپ کے کیس کے سلسلے میں جو نوٹس آیا تھا ان کو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس ایشو کیا تھا عمران خان کو. یس. تو اس کا تو اس سے الیکشن سے تعلق نہیں ہے نا. یونین ڈسکوالیفیکیشن کا کیس چلا رہے تھے کہ ہم کیوں نہ آپ کو ریموو کریں فرام چیئرمین شپ. وہ تو ہم بات سمجھ گئے. وہ کیس آرڈر ہے نا. یس یورانا. اس سے تو کوئی تعلق نہیں. الیکشن کی بات پوچھ رہے ہیں آپ یورانا. تعلق ہے. وہ ڈسکوالیفیکیشن کا بیس بنا کے چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہ رہے تھے. اس میں جب نوٹس آیا کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوئے تو اس میں انہوں نے وہ فیکٹس کا ذکر کیا، لیگلی انکریکٹ کرایا. تو جب کورٹ میں چلا گیا، کورٹ میں پڑھا گیا تو انہوں نے کہا سیم ایشوز انوالو ہے، لہٰذا لیگل سائڈ پہ اس کے ساتھ کلب کر دیتے ہیں. ادروائز وہ انفریکچوس ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف انٹرا پارٹیز الیکشن. تو اچھا ایک سیکنڈ ہے، ایک سوال اور اٹھے گا. جی یورانا. ایک میٹر آپ نے خود لاہور ہائی کورٹ گئے، 5 ممبر بینچ بنوائی، الیکشن کا میٹر ہے، الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں. آپ کا موقف تھا الیکشن صحیح ہو، پھر آپ نے کہا چلو پھر بھی کر دیتے ہیں الیکشن دوبارہ، خوش ہو جائیں. تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ ہی میں رہتے نا، پھر آپ پشاور کیوں چلے گئے؟ یورانا ہم نے الیکشن پشاور میں کروائے تھے. الیکشن پشاور میں کروائے تھے تو اس سے تو کوئی یورانا میجارٹی آف ریزن. خان صاحب ذرا مجھے قانونی ہم کیوں گئے تھے یورانا؟ فورم شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے. اسلام آباد میں ہماری لیڈرشپ آپ نے استعمال کیا، میں نے نہیں استعمال کیا. میں یہ یورانا صرف اب آپ دیکھیے نا، ایک کورٹ کے پاس ایک لسٹ پینڈنگ ہے. یس یورانا. الیکشن ہی کے مطابق ہے، اور نہ صرف عام بینچ ہے، انہوں نے 5 ممبر بینچ آپ کے لیے بنا لی ہے. جی. اب وہ میٹر پینڈنگ ہوتے ہوئے دوسرا ہائی کورٹ دیکھ کیسے سکتا ہے اس بات کو؟ یہ اس کا ذرا قانونی جواب دیجیے. یورانا میں نے عرض یہ کیا کہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف انٹرا پارٹی الیکشنز وہ پٹیشن انفریکچوس ہو گئی جب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. وہی آرڈر ہے نا، آرڈر تو وہی الیکشن کمیشن کا. یورانا وہی آرڈر ہے، لیکن اس کو جب ہم نے امپلیمنٹ کیا تو ہم نے الیکشن کرائے پشاور میں.
پشاور میں اس الیکشن نا انفرکچس ہونے کی یہ میرے حساب سے آپ کی بات لاجیکل ہے، مگر اس آرڈر میں آپ کے وکیل نے کہا کہ نہیں انفرکچس ہوئی ہے. یور آنر وہ لیگل سائڈ پہ انفرکچس دوبارہ پڑھتے ہیں آرڈر. Sayyid Ali Zafar advocate representing the petitioner submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Yes, Your Honor, High Court raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding up What you are intra-parties arguing, that elections. is correct. Yes. According to legal situation, it had become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections, but since the questions were This is the involved. divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, which is the legal appearing questions before the- involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that has been clubbed and referred to the full court. We held the election, they were full, the election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to Islamabad. آپ کے اپنے الیکشن کمشنر نے کہا they were not held in Peshawar, they were held in some place called چمکنی. Your Honor, ہم نے ارینجمنٹ کروائے تھے، ان کو سیکیورٹی مانگی، ہم نے پشاور. جی یور آنر، جی Are you arguing as party, as counsel, what? یور آنر، جو آپ کی اسسٹنس ہو سکتی میں اس کا جواب ہم تو سینئر کاؤنسل سے لینا چاہ رہے ہیں. We have noted all the questions. میں صرف Put it in writing. خان صاحب دیکھیے لیٹس گو بائی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. جی ہم ابھی اس پہ نہیں آئے کہ آپ نے صحیح کیا غلط کیا، انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. جی آپ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کر دیا، صحیح کیا غلط کیا وہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ آرڈر کو آپ نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں سے ایک پہلے سے پٹیشن پینڈنگ پڑی تھی، آپ نے کہا اس پٹیشن کو اس کو ساتھ لگا لیں، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کی ریکویسٹ پہ لارجر بینچ بنا دیں، انہوں نے 5 ممبر بینچ بنا دی. پھر علی ظفر صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کورٹ نے آبزرو کیا کہ اب تو آپ نے الیکشن کر لیے تو اب آپ یہ پٹیشن اس کو ختم کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کو آپ رکھیے سب جوڈیس وتھ فل بینچ. اب یہ میٹر الیکشن کا میٹر ہے. چلیں اب یا تو آپ انتظار کرتے کہ ہائی کورٹ، یا تو آپ اس کو واپس لے لیتے، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. انفرکچرس خود سے نہیں ہوتی نا، کوئی آئے گا کہے گا پھر آرڈر اس پہ پاس کرے گا جج انفرکچرس ہو گئی ہے واپس ہو رہی ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں. اس پٹیشن کو آپ زندہ رکھ رہے ہیں، آپ جا کے پشاور ہائی کورٹ کیسے پہنچ گئے یہ مجھے سمجھ نہیں. دیکھیے یہ تو سبسیکوینٹلی جب الیکشن ہو گئے اور اس کو الیکشن کمیشن نے نل وائڈ ڈکلیئر کیا، پھر ہم پشاور ہائی کورٹ گئے. یہ تو لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں پسند آیا؟ نہیں لاہور اس کی وجہ پہلے آپ کو وہی آپ ایک کورٹ جاتے ہیں پھر دوسرے جاتے ہیں. نہیں سر، اب وہ مطلب یہ نہیں سر، اس کا وجہ ہے، اس کی وجہ یہ جب ہم نے الیکشن کرائے ہمیں کہیں اور سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا رہی تھی، صرف پشاور میں ہمیں سیکیورٹی فراہم کی گئی. آپ مانگ لیتے نا کورٹ سے بات کہ مجھے سیکیورٹی نہیں جا رہی ہے، ہم اگر ہائی کورٹ نہیں دیتی ہم آپ کو دیتے ہیں. ہاں یہ بتائیں، یہ نہ بتائیں خان صاحب، مشکل سوال آپ ان پہ چھوڑ دیتے. سیکیورٹی کا جو ہے نا یہ مشکل سوال ہم ہمیشہ سینئر کاؤنسل سے پوچھتے ہیں. یہ مجھے رائٹنگ میں جو آپ سارے آپ دیجیے، بالکل دیجیے، جو آپ دیں گے رائٹنگ میں آپ کے سامنے. مگر دیکھیے نا پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایک عام کیس ہوتا ہے نا، یہ ہے ٹائم ریلیٹڈ کیس. یہ آپ کو سمبل نہیں دے رہے ہیں، آپ کو ایک سمبل چاہیے، تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سمبل بنتا ہے آپ کو فوراً مل جائے. تو ہم عام طور پہ تو آپ کو بہت ٹائم دے دیتے، مگر اس میں پھر آپ کو سمبل نہیں ملے گا، ہم یہ نہیں چاہ رہے. اسی لیے ہم نے کہا آپ جب چاہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں. دوسرا ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی میں نے اپنے کولیگس کو کہا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے، اس کو پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں جب تک یہ اس پہ، اب دیکھیں وہی سارے لوگ ہیں، سید علی ظفر صاحب بھی وہاں موجود ہیں، وہ بھی نہیں بتا رہے ہمیں کہ کیا بنا اس کیس کا. یہ تو نہیں کہ دوسرے کاؤنسل ہیں، وہی کاؤنسل ہیں نا سارے پینڈنگ ہے. We'll submit in the morning, sir. چلے مگر یہ دیکھیں، اب آپ گور صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، فورم شاپنگ، جو کورٹس جنرلی فراؤن اپون. تو یہاں سے ریلیف نہیں ملی تو جا کے وہاں فائل کر دو، وہاں سے نہیں ملی تو دوسرے کورٹ میں چلے جاؤ، تو پھر یہ پھر سسٹم کو خراب کرتا ہے. تو دیکھیں اب آپ نے ٹھیک ہے لاہور چلے گئے، فائن، تو پھر وہیں رہیے نا لاہور میں، پھر آپ کیوں جا رہے ہیں پشاور؟ یا پھر آپ جائیے جہاں کے الیکشن کمیشن موجود ہے، جو کہ اسلام آباد ہے.
تو دیکھیے اب آپ کہیں جی میں الیکشن کرتا ہوں جا کر فلاں جگہ میں اس کی پٹیشن کروں گا, آپ اپنا کاز آف ایکشن نہیں کریٹ کر سکتے. کاز آف ایکشن از کریٹڈ بائی لا, یعنی کہ میں یہ کام کروں گا تو میں نے جو کام کیا اس بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے جناب, اچھی طرح جانتے ہیں بھائی. آپ کے سامنے بات پوری چلو, آپ کے سامنے پینڈنگ ہے کیس جس میں ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے, ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے, ہمیں کہیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی, ہمارے لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے, یہ ساری باتیں کہیں. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ان دیز سرکمسٹانسز میں, نہ اسلام آباد میں ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی نہ لاہور میں جہاں ہم الیکشن کرا سکتے. سو پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ دی اونلی پلیس ویئر سیکیورٹی از پرووائڈیڈ از ان پشاور, اینڈ therefore we held the election in Peshawar. When elections were held in Peshawar, territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court. So see, these are the various stages of a case. دیکھیے خان صاحب جی, ایک ہوتا ہے انتظامیہ, اس میں ابھی اب کئی, ایک ہے الیکشن کمیشن وہ ایک آئینی ادارہ, ایک ہے عدالتیں جو کہ آئینی عدالتیں ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. آپ آئے ہمارے پاس, علی ظفر صاحب اس کیس میں تھے اور الیکشن کی بات ہوئی, ہم نے اس کیس کا فیصلہ 12 دن میں کر دیا کہ الیکشن ہوں. 8 فروری کی تاریخ طے ہوئی, سب لوگ خوش تھے, آپ بھی کی پارٹی خوش, الیکشن کمیشن خود, صدر خوش, کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کہا, اٹارنی جنرل خوش, چاروں ایڈوکیٹ جنرل خوش, سب نے یہ متفقہ طور پہ یہ ہو گیا. تو جب بھی کوئی, اب آپ یقیناً آپ کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوں گی, مگر کورٹ اس آئے گا جب کوئی آئے تو اس کے سامنے نا. دوسرے کیس میں کنٹیم میٹر میں آئے, وہ ایک اور بینچ نے فوراً آرڈر پاس کر دیا کہ جی ساری سہولتیں جیسے اکارڈنگ ٹو لا دی جائے. اس کے بعد کنٹیمپٹ آئی, فوراً ہم نے لے لی کنٹیمپٹ اپلیکیشن, جو انہوں نے کیس بنایا ہم نے ان کو رپورٹ منگوا لی. تو یہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, یا تو بتائیں ہم نے کوئی کام نہیں کیا. لاہور ہائی کورٹ کو آپ گئے, آپ نے کہا جی لارجر بینچ بنا دو, انہوں نے 5 ممبر کی بینچ بنا دی. پھر آپ اس کو ابینڈن کر رہے ہیں نا, یا تو آپ کہیں کہ میں واپس دیتا ہوں کیس ختم, مگر اس کیس کو لٹکا کے کہیں اور کیسے جانا ہے, یہ ذرا سمجھانے کی, ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ ورچولی انفریکچرس ہو گیا, اس لیے تو پھر ایک لائن کی درخواست دینا تھی نا, وہ تو کورٹ خود آپ کو کہہ رہی ہے آپ نے الیکشن کر لیے تو یہ تو میٹر ختم ہو گیا. آپ نے کہا نہیں یہ فل بینڈ کو آپ بنائیں اور یہ ہم کریں گے. پھر آپ نے سوری ٹو یوز, مگر یہ تو پھر آپ نے اپنی پیر پہ کلہاڑی مار دی, پھر آپ نے اپنے آپ کو روک دیا لاہور ہائی کورٹ کے جوریسڈکشن میں. آپ ادھر سے نکل جاتے, آپ کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا جی تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد چھٹیاں ہو گئی تھی, کیس لگا نہیں اس کے بعد, جو بھی بات ہے, مگر وہ لاہور ہائی کورٹ نے سیز تو کر لیا نا, لسٹ وہاں پڑی ہوئی ہے. ایک الیکشن کا میٹر لاہور ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے, ایک الیکشن کا میٹر اسلام آباد میں پشاور میں چلا گیا. تو اب کانٹرڈکشنز بھی آ سکتے ہیں, یہ تو کبھی نہیں کرتے ہیں نا کہ صاحب یہ شارٹ آرڈر ہے, یہ جوریسڈکشن کا ایشو اٹھائے ہائی کورٹ کے سامنے پشاور ہائی کورٹ میں, whether the writ is maintainable according to the territorial jurisdiction of the court or not. Yes, it is. Because we have no order, we have only short order. We do not know what are the reasons, if any, assigned by the learned bench of the... Yes, sir. Because in this case, is there a question of interrelated jurisdiction? I'm sorry to interrupt you. Why? I was counsel for the ECP. You raised the objection? In which case? In my lord, writ petitions from which this judgment, the impugned judgment arises, my lord. Yes. And to answer my lord's question, not only did I raise the objection of forum shopping based on the Tirimzi judgment, but several of the complainants who were also heard, they also raised the same objection that in the first instance, my lord, the order dated 23rd/11 is impugned in Lahore High Court. Then the order dated 22nd, which arises from that, is impugned in Peshawar High Court, and through an identical petition also impugned in the Lahore High Court. So there is an identical petition to petition 617. That's not party's petition. This is absolutely incorrect. My lord, that petition making incorrect statement. May I complete what I'm saying? چلیے آپ نوٹ کر لیجیے, that can be responded because is issue of jurisdiction. یہ تو تعین کر لیں
WP 81171 of 2023 and WP 332 of 2023, are they still pending in the Lahore High Court? Yes. Can we have a clear statement on that? Yes. آپ بتائیں خان صاحب, آپ you are the petitioner. According to the last order, both are pending, I think. Pakistan Tehreek-e-Insaf is the petitioner in both these petitions apparently. یہ pending ہے. آج کی تاریخ میں کیا پوزیشن ہے؟ 332 میں یورانا PTI نہیں ہے, اس میں عمران احمد خان نیازی ہے. Is it pending or not? Yes, pending. دونوں pending ہیں. That is his personal grievance on that. چلیں وہ بھی الگ کر دیا, مگر آپ نے اس کو کلب کر دیا 81171. So how, when the matter is pending adjudication before a court of law, how can you go out of the territory of that court? Your Honor, no subsequent cause of action arise ہوا ہے, subsequent election take place ہو گئے. جس طرح بندہ کنوکٹ ہو جاتا ہے, سزا کاٹ کے باہر آ جاتا ہے, اپنے کنوکشن سے کوٹل چاہتا ہے, تو یہ وہی ہے. ہم نے کہا جو فائنڈنگ دی ہے پہلے میں وہ بھی غلط تھی. پہلے ڈیسیجن اس بات پہ سیٹ اسائڈ کروائے میں ہمیں. آپ وکیل آج ہیں یا میں آپ کی ذرا دیکھیں نا, یہ ذرا دیکھیں, یہ خان صاحب یہ بہت ٹیکنیکل کوشچنز ہیں نا, تو ہم ذرا خان صاحب کی اگر سینئر کاؤنسل کا پھر فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے نا. اگر آپ یا پھر وہ بھی نہیں بات کر سکتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ چن لیں. مگر ہمیں آپ ان کے کان میں بھی بتا سکتے ہیں خان صاحب کے, مگر ذرا دیکھیں لیگل ایشو کو ہم ذرا ریزالو تو کر لیں نا. تو یہ دیکھیں, میرا جو طریقہ کار ہے شاید لوگوں کو پسند بھی نہیں ہے. اگر میرے یا پسند ہے پتہ نہیں, جو میرے ذہن میں کوئی قانونی لیگل ایشو کھڑا ہوتا ہے میں خاموش نہیں رہتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ اٹینڈ کر لیں. ٹھیک ہے, جب میں وکالت کرتا تھا مجھے وہ جج پسند ہوتے تھے جو مجھے بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ ایشو ہے. کچھ لوگ خاموش رہتے تھے, بعد میں کچھ فیصلہ کرتے تھے, پوچھا بھی نہیں مجھ سے. تو میں آپ سے بھی بتا رہا ہوں میں ہے کہ جو جناب نے سوال پوچھا ہم اس میں جناب کو سیٹسفائی کریں. یہ تو فیکچوئل پلی ہے نا, اس پہ تو کوئی لیگل پلی کیا ہوگا کہ آپ نے وڈرا کیوں نہیں کی, اور یا آپ نے اس کو کیس کو چلایا کیوں نہیں, یا آپ درخواست دیتے کہ آپ کیس میرا کیوں نہیں چلا رہے ہیں کہ بھئی بہت اہم کیس ہے جلدی کریں. Okay. So can we continue with جی مخدوم صاحب فرمائیے. My Lord, just to complete the sequence of what your Lordship was presently dealing with, even after this second order was passed, in spite of the pendency of the petition in the Lahore High Court in the first order, this second order was challenged before the Peshawar High Court. It was more or less within a few days also challenged before the Lahore High Court. The Lahore High Court dismissed the petition. اور پٹیشن ہے جی جی دوسرے آرڈر کے خلاف. دیٹ از مائی لارڈ دی پٹیشن نمبر 287 of 2024. 287 of 2024. نہیں پہلے پٹیشن دکھائی کہاں ہے سر؟ دس از پیج 615 to page 615 to 630. یہ ایک چیز آج یہ دو کیسز معلوم کیجئے لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں یا نہیں. یہ بیٹی ہوئی سر Shower at 616, your Lordship will see they claim to be ex-Secretary General and candidate PTI Gujranwala. یہ عمر آفتاب ہیں, عمر آفتاب اور بلال ناصر, page 616 and Bilal Nasir. تو یہ تو PTI نہیں ہے. No, they are, he's, if your Lordship will see, son of Chaudhry Dellu, President PTI Sheikhupura. وہ انہی کے ہی ہیں, وہ اس میں لکھا ہوا ہے. Is the President PTI Sheikhupura. This petition کا نمبر کیا ہے؟ This petition number, my lord, is نیل لکھا ہے 287 of 2024. اس میں کیا ان کی پریئر ہے؟ Identical to 616. Identical, I will read out to your Lordship. That's at page 629. To nikalna. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this court may kindly be pleased to: 1. Instant petition may kindly be accepted, hold and declare that the impugned order of ECP dated 22/12/2023 is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof set it aside forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order dated 22/12/2023 forthwith and direct the Election Commission,
Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required with section 2093 in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith. Declare that election symbol has been illegally and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners. अब जो पिशावर वाली पिटीशन है वो दिखाइए सर, उसका पेज नंबर 49 है, पार्ट 1 में है सर. And if your lordship see, your lordship will find that they are virtually the same. इसमें ऑर्डर का जिक्र नहीं है 22/12 का. ये 22/12 का ऑर्डर कौन सा है? The impugned order is of 22/12, my lord. इसमें तो नहीं है कहीं 22/12. प्रेयर के अंदर नहीं लिखा हुआ, but otherwise the petition impugns the order of 20. My lord, your lordship will see the impugned order in the index at page 30. And नहीं, पिशावर में जो पिटीशन है, अभी प्रेयर क्लॉज में 22/12 का जिक्र कहाँ है? Declare the impugned order. Prayer mentions the impugned order. If your lordship will see the impugned order, that's at page 21. नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ कि पिटिशनर ने डिस्क्राइब किया है impugned order. ये impugned order सर पेज 33 पे grievance and impugned order. If your lordship will see, ये लिखा हुआ है the aggrieved by order dated 22/12/2023 passed by respondent number 1 as the impugned order. पैराग्राफ 1 में जिक्र है. It's the same. अच्छा, इनका कहना कि क्या है, ये हमने फाइल नहीं की है लाहौर वाली? Sir, right now that's what your lordships have heard. I don't know. I want to ask that question. In Lahore, has the Lahore High Court passed an order? In Lahore High Court, an order was passed, and I have placed that order before your lordship. That is at page 631. ये क्या है? This is an order of the learned single judge. ये क्या किया सिंगल जज ने? Single judge, sir, held that you have also gone in respect of the same order to Peshawar, so I will not hear the matter. But the determination by the single judge is at page 634. ये डिस्क्लोज किया था कि WP 81171 और WP 332 पेंडिंग है. सर 8771 तो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी ना सर. ये भी तो लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट जी, ये लाहौर हाई कोर्ट में है. इसमें इन्होंने जिक्र, ये इनको पता था जी, इसका जिक्र है डिटर्मिनेशन में. The learned single judge says that. If your lordship may see, नहीं तो उन्होंने कहा हम नहीं फैसला करेंगे. जी, they said that we will not deal with it. If your lordship see page 637. ये तो order speaking, ये तो फिर तो ठीक है, ये order will not come in their way. This is the second order, but there is an observation by the learned single judge in respect of point number 2 on page 639. उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी पेंडिंग है पेशावर में. That, and my lord, they say 639 point number 2. The learned single judge makes the observation, learned law officers also objected to maintainability of the petition by submitting that fundamental right of freedom of association is subject to reasonable restrictions imposed by law, which in the instant case is the Act and the rules framed thereunder, more specifically sections 208 and 215 of the Act, and therefore without challenging the vires thereof and declaration of the same being ultra vires Article 17, the relief cannot be granted. The learned counsels for the petitioners, when confronted whether the petitioners have challenged the vires of section 215(5) of the Act, read with Article 17 of the Constitution, replied that the same has been challenged before the Peshawar High Court. If your lordship may see 5th line from the foot of the page, in view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act ultra vires Article 17 of the Constitution. I can't find Sir, last five lines. On page 639? 639. Achha, okay. In view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act, ultra vires Article 17 of the Constitution. ये उन्हें challenge किया ये order? ये order में ये DB में गए sir. उसका number क्या है ICA का? They went in division. इस order की date क्या है? We got that order yesterday. ये इस order की तारीख क्या है? Sir, this order is 11th January. 11th January. In intra-court appeal number 2282.
نہیں اب انٹرا کورٹ اپیل کا نمبر بتائیے جی انٹرا کورٹ اپیل کا نمبر ہے لرنڈ سنگل جج کا کیا آرڈر ہے 2282 لرنڈ سنگل جج کے آرڈر کی تاریخ بتائیے جو آپ پڑھ رہے تھے order of the learned single judge is dated 3rd of January 2024 3rd of January 2024 at page 631 your lordship will see the date اب یہ گئے انٹرا کورٹ اپیل میں جی یہ they go in intra court appeal آئی سی اے میں نمبر آئی سی اے کا 2282 of 2024 جی that اس میں کیا ہولڈ کیا sir in that آپ نے کاپی دی خان صاحب کو یہ withdraw کر لی انہیں اپیل Ji sir, they withdrew it and paragraph 3 is the relevant paragraph on page 2. In this view of the matter, the learned counsel for the appellant when confronted with the prayer qua the illegality or irregularity in the judgment passed by the learned single judge in chambers with respect to section 2155 of the act, a bid regarding allocation of election symbols, he has nothing in his pocket to rebut the same and opts to withdraw this intra-court appeal, which is hereby dismissed as withdrawn. Consequently, the observations rendered by the learned single judge in chambers are hereby upheld. Do they own these proceedings or they don't own these proceedings? My lord, Or you don't know? this is for the respondents before your lordship to say, but the two petitions in Peshawar and Lahore were verbatim. یہ پوچھ لیتے ہیں خان جی سر صاحب پوچھ لیں خان صاحب, do you own this petition or you don't? 287 and IC 2282. We don't. نہیں ہوا these people کیا نام کا بلال ناصر چیما اینڈ یہ کون لوگ ہیں بلال ناصر چیما کون These ہے are not on behalf of the party. Candidates have filed. نہیں who's بلال ناصر چیما associated with you? There are two, one is بلال ناصر چیما and the other is چودھری عمر آفتاب دھلو. I hope I've pronounced it correctly. Do you own these petitions or you don't own these petitions? No, we don't. And who are these two gentlemen? Do you know them? We have not. Who are these two gentlemen? PTI کے سر There may be members of the party. I don't know. I think They are نہیں اس not میں لکھا ہے officers of the ایکس party. نہیں اس میں لکھا ہوا ہے نا پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخو پورا ایکس سیکرٹری جنرل اینڈ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی. دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو کینڈیڈیٹ اپنے طور پہ ضرور کر سکتا ہے میرا مجھے وہ کیا اس کو کہتے ہیں میرا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے وہ تو بات اس کی صحیح ہے, مگر اس میں جو انہیں پریئر مانگ لی ہے وہ تو پارٹی کی بنیاد پہ مانگی ہے. تو آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ ادھر دیا کہ یہ اس کو کاٹیں یہ پریئر اس کو ادھر سے یہ پریئر ہم یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں. He had no authority on behalf of the party to file on میٹر ہے نا, ہمیں کیا پتا آپ کے پاس اتھارٹی ہے, گور صاحب کے پاس اتھارٹی ہے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا تعین. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے یعنی پارٹی کی آتھرائزیشن سے نہیں ہوئی, یہ انڈیویجولس نے کی ہے. مگر خان صاحب جیسے آپ نے لکھا ہوا ہے یہ عمر آفتاب سوری سر عمر آفتاب ہیں پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخو پورا, پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخو پورا, اور یہ جو بلال ناصر چیما صاحب ہیں ایکس سیکرٹری جنرل اینڈ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی That's what he's claiming. You see, نہیں میں آپ ہماری بات صرف سمجھ لیں, نوٹ کر لیں. جی جی بتائیں. ایک چیز ہے نا, پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہزاروں پٹیشن فائل ہوں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, مگر جب یہ چیز اگر اس پہ آ جائے ریڈار پہ تو اس کا جواب وہ اس کا جواب ہمیں دے دیجیے گا. اگر جہاں تک ان کی ذاتی مسئلے ہیں, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے یا کوئی اور ایشو ہے, بالکل کریں, وہ تو ہر کینڈیڈیٹ اپنی بھرے گا, آپ پارٹی سے تو تعلق نہیں ہے اس لحاظ سے, مگر اگر وہ پارٹی کو جو پریئر اس نے مانگ لی نا وہ پارٹی کی مانگ لی پریئر اس نے, اور اس پہ جج صاحب نے فائنڈنگ بھی دے دی, تو اب وہ ججمنٹ کو ہم ایویپریٹ تو نہیں کرے گا نا ہوا میں. انہوں نے کہا کہ جی جب تک آپ یہ دو شکیں الیکشن ایکٹ کی چیلنج نہیں کر سکتے آپ یہ بات کر نہیں سکتے. ہو سکتا ہے غلط ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہے, مگر ایک جج کی فائنڈنگ آ گئی, وہ فائنڈنگ دو ججز نے کنفرم کر دی, تو اب تصادم تو ہو گیا نا پشاور ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں. اب ججمنٹس غائب تو نہیں ہوں گے. وہ لاہور ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ والا ججمنٹ آپ نے ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے,
सर हम पार्टी नहीं थे, हमने चैलेंज किया सर। ये जो कहते हैं ये कोई अपनी तरफ से गया ना, चैलेंज करना चाहिए दोनों को पार्टी बता। सर उसमें हम पार्टी नहीं है, पार्टी द पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट देयर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना, मगर जज साहब ने सही या गलत एक फैसला तो कर दिया है ना, वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो HM साया केस में अगर आप पार्टी ना भी हो तो आपको हक तो मिलता है ना। तो अब आपको पता चल गया है, एक जजमेंट आपके खिलाफ आ गया है, और किसने फाइल किया है? कोई आपके दुश्मनों ने नहीं किया, आपके अपने लोगों ने फाइल किया है। वो तो एक अलग बात है, किसी ने शरारत खेली आपके साथ और चलो भाई ये कर दें, वो आप ही के लोग हैं, आप उनको आपने नजरअंदाज भी नहीं किया है कि हमने इनको पार्टी से खारिज कर दिया। क्या है, आपके कैंडिडेट भी हैं PTI के, तो उनको हम ऐसे तो हम, और अब हाई कोर्ट के जजमेंट्स को हम क्या करेंगे? वो कोई चैलेंज करेगा ना, नहीं तो अब जो भी फैसला है उसको जब तक कोई चैलेंज तो करे ना, फिर हम आगे पीछे उसको कर सकते हैं। अगर आप उसको चैलेंज ही ना करें, उसको छोड़ दें कि जी हम तो उसमें पार्टी नहीं थे, जजमेंट फिर भी रहेगा अपनी जगह पे ना, वो तो फॉर ऑल टाइम्स टू कम रह जाएगा अपनी जगह पे। अब वो आपको भी शायद अफेक्ट करे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी अफेक्ट करे। कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती है कि भाई ये जजमेंट गलत है, तो वो तो कह सकते हैं कि हम तो इस पार्टी में नहीं थे, हमें सुना नहीं, मगर आपका तो फिर नहीं कह, आपके कहना जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। बहरहाल आप नोट कर लीजिए बात, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये पिशावर हाई कोर्ट का भी IC में ऑर्डर हुआ है, WP में हुआ है? WP, my lord. IC है नहीं है, पिशावर में IC नहीं है। Two judges here, the petition like in Sindh, my lord. As a general rule, now this I'm asking a question. Court's order of a high court by a learned single judge in writ petition, and another province's court order in a ICA, which takes priority? My lord, have you understood the question? Yes, my lord. Yes, my lord. Over there, at least at the ICA, a determination has... Forget this case. I'm asking a question of law. My lord, it's a DB order in both cases. Yes. So they stand more or less on the same plane. Yes. Generally. You won't add the one judge to the two judges and say there are three judges now. No, my lord, because the order is that of a division bench in both, okay, both it's cases. Interesting question. Yes. Okay. Have you ever considered something like this before? Not this honorable court, no, my lord. This has arisen, the issue has arisen. No, ये इसको छोड़ें, general question of law पे पूछ रहे हैं. General question. One DB decides a matter and one ICA. ICA is an appellate forum. Decides a matter. Both stand on equal footing if there are two judges naturally in both. So that was the question. Yes, my lord. Because I've never considered this question before. My lord, I haven't come across a judgment where the issue has been considered. Ji, continue. My lord, I was taking your lordship through page 140, which your lordship had taken a look at, and the election of office bearers, your lordship had taken a look at 141, 142. Then we, my lord, proceeded to page 192, where your lordship was dealing with the Federal Election Commission. And election commission shall be formed comprise following: Federal Election Commission. तो हमने पढ़ लिए 4 सूबों के और 2 दूसरी टेरिटरीज के, and sections की violations हो रही है. जी, and these are the ones which the election commission says. What is the position of the election commission? They say that there was a duly elected commission. That was, at that time, the Federal Election Commissioner was Mr. Jamal Akbar Ansari. Now, thereafter, we have been told that this is the current gentleman, is the chairman, who is also the respondent number 2, is the Chief Election Commissioner of the party. Insofar as we are concerned, we have not been informed of how he has come about. I showed to your lordship that he has been appointed as a result of an order passed, which is on your lordship's files, which your lordship just saw, by Mr. Umar Ayyub. The election commission says this is not the correct procedure for appointing someone, because that is dealt with. Has Jamal Ansari left the party?
My Lord, the Election Commission says in the order which was impugned before the Peshawar High Court and which is before your Lordship, that the Election Commission was not informed how this change has taken place. As a matter of fact, do you know or no? As a matter of fact, we don't, my Lord. My instructions are that we don't know. I'm thinking of another thing. PTI's earlier position was that the elections that we held in June of 2022 were in accordance with our constitution. Some people got elected, I don't know, I presume, and those people, now they've said, election commission says no, this is not proper election. They say, okay, we go and hold another election. What happens to those people? Were they heard? Because वो भी तो उनकी भी तो vested right हो जाएगी ना, unless they are the same group of people, the same identical people who again got elected. Because if they are maintaining that are they conceding that the elections of June was not in accordance with law, or are they sticking with the story, or saying, okay, fine, we set aside these elections, has the political party set aside its own elections and said we'll hold it again? Otherwise, वो लोग कल को वो petition file कर देंगे, जी मैं तो elected हूँ, ये कैसे आ गए हमारी जगह? मतलब इस पे कोई बात हुई या नहीं हुई? Before the Election Commission, they took the position that since you have pointed out all these defects, in order to cut the controversy short, we will recall those elections and hold elections afresh. That's how the second election came about. वो वाले भी अनपोज थे? Those were, yes, my lord, and copy. They were, the instructions are, they were unopposed. तो आपका इनसे बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है इलेक्शन पे? Sir, this was going on since the time when this particular party was the party in administration. The first reminder issued to them to hold elections because the period has expired was issued on 24th May 2021. 24th May? May 2021. फिर आपने कहा कि चलो आपको एक extension time दे देता हूँ. We are being benevolent. They sought an extension on the ground that due to COVID. PTI की हुकूमत कब तक थी? Sir, their government continued till 10th of April 2022. अच्छा, तो ये उस जमाने में ये हुकूमत में थे? Yes, sir. तो वे इलेक्शन क्यों नहीं कराए? Sir, they said we were unable to hold the elections on account of the pandemic COVID-19. And therefore, the Election Commission gave them a 1-year extension to hold the elections. Your Lordship will see. जब वो हुकूमत में थे तो आपने उनको रिलीफ दे दी. My Lord, we gave them a show cause notice while they were in. Show cause notice के बाद में कहा चल भाई एक साल बात कर लो. Yes, my Lord. But while they were still in government, on 24th of August 2021, we wrote to them and said that you were granted a 1-year extension and now the due date is coming and hold elections. Then we sent them a reminder on 7th. जरा बताइए ये जो आप रेफर कर रहे हैं कहाँ है? My Lord, yes. The first letter your Lordship will see is 24th of May 2021, which is at page 391 of your Lordship's paper. Just for disclosure, Mr. Makhdoom Ali Khan, we reached out to the Lahore High Court to find out the status of WP 332 of 23 and the other matter, and both are pending adjudication before a 5-member bench. Yes, my Lord. This is just now got it. The order that your Lordship last saw, they were adjourned to 12th of January, which is today. ये तो आज status हमने कहा, हो सकता है कभी dismiss हो गया हो, कुछ हो गया हो ना, non-prosecution या कुछ. तो आज तो this. Now please take us to the letter of 24th of May. My Lord, that is at page 391. I am directed to refer to the correspondence resting on the subject. Attention. एक second. 3. My Lord, page 391. आप तो part भी बता दिया करें. Sir, I'm sorry. Part 2. हाँ, 391 में 391. Page part 2. जी. I am directed to refer to the correspondence resting on the subject.
attention is drawn towards sections 208, 209 and 215 of the Elections Act 2017, read with Rule 158 of the Election Rules 2017, thereof whereby a political party is to conduct intra-party elections in accordance with its constitution, a mandatory requirement under the law to sustain, retain the already allotted election symbols, and to contravene with prescribed legal provisions, a political party shall be issued show cause notice by the Election Commission, and election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. Foregoing in view, it is advised that intra-party elections of your political party may be conducted timely in a manner provided in party's constitution to avoid being declared ineligible as given in law. If your lordship graciously turns but इससे भी पहले चल रहा था. Says I'm direct to refer to the correspondence resting on the subject. Yes. So there was some earlier correspondence. And till when was this political party in government? So this party was in government till 10th of April 2022. 10th of April. So this letter was written while they were in government. Yes, my lord. And this, so the allegation that you were somehow under pressure, are you making that point here? My lord, no, we are pointing out just to your lordship the history. The behest of the caretaker government, you're doing this? No. My lord, all that the ECP is saying before your lordship is that this is a matter, this is a background to how the first... जवाब किधर दिया उन्होंने? My lord, we didn't get satisfaction to this, so we issued a show cause notice, which is at page 392. जवाब तो दिया हुआ है ना उन्होंने. My lord, yes, they gave. They wrote that 2019 में था ना जी सर. If your lordship नहीं, ये 2021 का सर लेटर है. नहीं मतलब COVID-19 कहते हैं ना, 2019 का है ना. चले 19-20 निकल गया तो 21 में आप मांग रहे हैं सेक्शन. And then they give a reply. वो किधर है? My lord, that is at page 393. 393. ये जरा पढ़ लें जी सर. इसका रेलेवेंट पोर्शन पढ़ लें जो भी पूरा पढ़ना चाहें. That with regard to the paragraph 2, that with regard to the concern raised by ECP in the instant show cause regarding failure of PTI, provision of certificate pertaining to conduct of intra-party elections due on 13th June 2021, it is submitted without prejudice that due to COVID-19. तो ये मान रहे हैं कि ड्यू हैं? जी सर. And they were due as of 13 June, according to them, that due to COVID-19, all activities where public gather are restricted. It is due to this reason that holding of various events of the party, including intra-party elections, were affected, and many activities could not be carried out as per schedule. If your lordship may graciously turn the page, last paragraph, in light of above, you are therefore requested to withdraw show cause notice and a time period of 1 year, subject to permission to hold large public gatherings by NCOC, and government may be granted to PTI for holding of intra-party election in the interest of justice, please. Then, my lord, ये 1 year कब होगा एक खत्म? Sir, we give them time, and there's the next letter on 24th August 2021. Next letter, my lord, at page 395. Paragraph 2. As per record, the last intra-party elections of Pakistan Tehreek-e-Insaf were conducted on 13 June, and the tenure was fixed 4 years as per party constitution 2018. 4 years tha ya 3 years tha? Sir, according to the current constitution, it is 3 years. They are mentioning 4 years as per the constitution of 2018. This is the 2019 constitution which your lordship have before you. Later on, amended constitution submitted in the year 2019, and according to its sunset clause 4.1, the party has to conduct the intra-party election within 18 months of the adoption of the constitution of the party, and as such the target date was 1st November 2020. However, the Honorable Election Commission has accepted your request and advised to conduct intra-party elections of the chairman and other office bearers well before 13 June 2022. And then you are overtly generous. We give them a 1 year. You were overtly generous because they were in government. My lord, I mean they are themselves accepting that 1st November 2020 is the target date, and you said chalo 2 saal le lo.
Sir, because of the COVID-19 restrictions, because they had pleaded in the previous letter, asked for 1 year, that is why the election commission gave. There is no other explanation. पार्टी से आप भी जनरस थे आप या नहीं? Sir, दो चार पार्टी और भी थी जिन्होंने कोविड की वजह से एक्सटेंशन मांगी थी, they were granted the extension. That's correct, Your Lordship. तो अब इन्होंने आपने दी 13 जून को. जी सर. फिर आपने इन्होंने इलेक्शन कब किए फिर? Sir, the elections were then held on 13th June. इन्होंने 10 जून को किए. जी, जो आपने कहा कि सही नहीं है. जी सर. अच्छा. And that was also held after we gave them a reminder letter. वो आपने क्यों कहा था कि सही नहीं है 10 जून वाले इलेक्शन? बुनियादी बातें. They were because the elections were to be held in accordance with the constitution. नहीं, बुनियादी बातें बताइए. There were certain violations of the constitutional provisions of the PTI. आपको पता है points या नहीं? My lord, this was the ground urged over there, that several provisions of the PTI constitution were violated, that several of the persons were not appointed correctly, and that is why that order was issued. That impugned order is before your lordship. It is at page. नहीं, देखिए मखदूम साहब, एक सवाल उठता है जो हमारे जहन में भी है. हम जो जहन में होता है मैं कह देता हूँ, कभी कभी लोग पसंद नहीं करते हैं. हम ये देखना चाह रहे थे कि आपका इनके साथ रवैया जो है अब वो क्या सख्त हो गया है. सख्त कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सख्त हो गया है क्योंकि शायद कोई वजह से, या फिर आपका यही रवैया रहा है इनके साथ हमेशा से. तो ये खतूत से तो एक चीज तो जाहिर होती है कि आप इनसे कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, और आपने और ये मैंने मान भी लिया कि हाँ बात तो सही है आपकी, हमने इलेक्शन नहीं कराए. इन्हें वजह दी कि हमें 1 साल दे दो. आपने कहा चलो ले लो साल. आपने नहीं कहा कि 3 महीने ले लो, 6 महीने ले लो. भाई आपको क्या पता था कि कोविड 1 साल और चलेगा या नहीं चलेगा. बहरहाल आपने बहुत जेनरोसिटी का जाहिर की, तो 1 साल आपने इनको दे दिया. फिर उन्होंने इलेक्शन किया, आप कह रहे हैं फिर वो भी इलेक्शन सही नहीं हुआ. ठीक है, तो ठीक है, बस ये हम देखना चाह रहे थे कि ये आपका एटीट्यूड कैसा है, कि अभी बदला है या पुराना है. क्योंकि उस वक्त एक अहम बात जो सामने आई है वो ये, उस वक्त ये सरकारी पार्टी थे, अब शायद नहीं है सरकारी पार्टी. तो उस वक्त आप इनको अकोमोडेट कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया 1 साल का, मगर फिर भी अकोमोडेट किया. मगर आपने इशू रेज किया हुआ है इलेक्शन का जब से इनकी सरकार थी. My lord, yes. And the other thing, my lord, that at the very time, in the first letter which I read out before your lordship of 24th of May 2021, at page 391 part 2, we had said that the consequence of not holding this election, ये बात भी आप कर चुके हैं. इनको उस वक्त जब ये पार्टी इन पावर थे, इनको कहा कि आपका सिंबल वापस ले लिया जाएगा अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते. दिस इज द कॉन्सिक्वेंस. उन्होंने इस बात की मुखालिफत नहीं की. आपके पास ये हक है ही नहीं. दैट जुरिसडिक्शन दे डिड नॉट कॉन्टेस्ट. उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात सही, इलेक्शन नहीं किया, 1 साल दे दीजिए, हम कर देंगे. जी ठीक, समझ गए. आगे बढ़िए, कोई और पॉइंट? The next point is that when the elections were held first time round, we passed an order. They challenged that order, as your lordship saw. तो हो गया सारा. जी, वो सारी बात हो गई. Don't repeat yourself. Yes, they passed that order. Then they appeared before the election commission. They resigned from that position and they said we'll hold another election. Now and that time, then they have thereafter proceeded to hold the second election. As a result of the second election, the election commission has raised certain objections and passed the order. What is the crux of that order, the second order which was impugned before the Peshawar High Court? एक आपने बात की कि आपने जो अपने आईन में जो लिखा हुआ है, जो 7 मेंबरान का बोर्ड वो आपने बनाया इन इलेक्शन करने की. दूसरी बात आपने कहा है कि एक अजीब बात है कि पूरे पाकिस्तान में सभी अनअपोज्ड आ गए. तीसरी बात आपने कहा कि आपने ये तो बताया नहीं अपने मेंबरान को इलेक्शन हो कहाँ रहा है, नॉमिनेशन पेपर कहाँ है, कितने नॉमिनेशन फाइल हुए, मतलब कितने लोग मौजूद थे. तो ये आपकी बातें, इसके अलावा जो बातें वो बताइए. जी सर, हमने इनको ये कहा कि आपके रिपीट ना करें. No, my lord. We said that according to your constitution, you could
opt if there was a vacancy in the membership of the commission. But if the chairman ceases to be, the chairman has to be elected in terms of your own constitution, and the present chairman of the Federal Election Commission of the PTI is not an elected person. He has been appointed by Mr. Umar Ayub. You claim in the impugned order, in the order में नहीं, इनके आइन में पहले दिखाए ना शेख, फिर इम्प्यूग्ड ऑर्डर पे जाइए, या आपके कानून की बात कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट की? No, my lord, I am showing your lordship from their constitution, which is at page 124, and if your lordship graciously proceeds to page Federal Election Commission, you again taken my paper. My lord, at file 1, page 192. Yeah, one. Sir, the lordship will see functions. And the election commission marked the provision. Article 9, किस आर्टिकल? page 192. इसको दिखाना मुझे page 192. 9 तो इधर है ही नहीं. अच्छा, रोमन 9 जी, फेडरल, ये तो हम पढ़ चुके हैं. My lord, the Secretary General shall propose with the approval of the chairman. Yes, my lord. The Secretary General shall propose with the approval of the chairman the names for all the 6 commissioner and chief of the Federal Election Commission from outside the membership of the National Council, and that's the method of how they are elected. Paragraph 5. The commission can co-opt associated members for specific jobs departments and may co-opt members for any vacancy arising out of resignation or incapacitation of a member. 6. In case of the resignation or incapacitation of the Chief Federal Election Commission, full above mentioned procedure need to be adopted, which is the procedure of election given in paragraphs 2 and 3 above. So while a co-option, तो आपका कहना है कि उमर अयूब साहब के पास कोई इख्तियार नहीं था. That's the submission, my lord. क्या करना चाहिए था उनको? My lord, if the chief election commissioner has resigned, the election had to take place in terms of paragraphs 2 and 3. खत में क्या लिखा है? उन्हें रिजाइन किया या उनको रिमूव किया? It says that Mr. Gohar Khan has resigned and therefore you are being appointed. Page 89. Page 89, part 1. Following the resignation of Barrister Gohar Khan on 27th November 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC, Pakistan Tehreek-e-Insaf, with immediate effect. अगर आप ये भी कह रहे हैं कि ये सेक्रेटरी जनरल कैसे अपॉइंट हुआ उनका? And that is the other point which we make in that order by the Election Commission, that the Secretary General himself could not have been appointed in this manner, and in any event, on our record, Mr. Asad Umar still continues on as our Secretary General. As the Secretary General. On our record, Mr. Umar Ayub was never brought on. Election Commission का ये तो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि सेक्रेटरी जनरल चेंज हो गया. My lord, because the list of party bearers is filed with us, and we need to know who is there. लॉ के तहत? My lord, किस लॉ के तहत? My lord, under the Election Act, they have. हाँ, Election Act के जरा relevant provisions बताएं हमें, क्योंकि we've seen their constitution, we want to see now the law. Yes, my lord. If your lordship may see, the first provision in this respect is 200. Your lordship will see chapter 11, political parties. And then this is how 201, how the political party is constituted. A political party shall formally. वो ना पढ़े, relevant बात बताएं. जी सर. Sir, B में आप देखें organizational structure of the party at the federal, provincial and local levels, whichever is. कौन सा सेक्शन में पढ़ रहे हैं आप? 200. 201. Section 200. 200 या 201? 201 सर.
200 is just who will be a political party. 201 is shall formulate so it's a requirement of the law. A political party shall formulate its constitution by whatever name called, which shall include the aims and objectives of the political party, B, organizational structure of the political party at the federal, provincial and local levels, then membership fees, designation and tenure of the office bearers of the political party, criteria for receipt and collection of funds for the political party, and F, my lord, procedure for 1, election of office bearers, 2, power and function of office bearers including financial. Subsection 3 है मेरे ख्याल में. My lord, any change in the constitution of a political party shall be communicated to the commission within 15 days of incorporation of the change, and the commission shall maintain updated records of the constitutions of all the political parties. Are we here referring to the constitution of the body or Yes, constitution document? My lord, in my submission, this sounds like the constitution of the body, constitution of a political party. Yes. तो ये है 2013. Yes. तो हमारा सवाल था क्या क्यों बताएं आपको, तो 201 ये लाजिम करता है उनको कि बताएं आपको. Yes, ma'am. And then 202, how the political parties are enlisted. And then if your lordship may proceed. तो ये आपसे राब्ता पॉलिटिकल पार्टीज का मुतवातिर होना चाहिए. ये जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ आप इनके लिए तो नहीं कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कर रहे हैं. That's true for every political party. नहीं, आपने ये तो नहीं किया इम्तियाजी सलूक इनके साथ. No sir, no, not at all. We have required this of every political party. Then your lordship will see section 206. This is the selection for elective offices. Then 207, functioning of a political party, and that requires them to convene a general meeting every year. It requires that they shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels. Then your lordship will see 208, the office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. Any member of a political, then who can participate, my lord? Any member of a political party, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting election for any political membership party. की डिटेल्स भी आपको देना होती है या नहीं? सर ऑफिस बेयर्स की डिटेल्स देते हैं ये. मेंबरशिप की जरूरत नहीं है. Initially देते हैं. Right, when the party is enlisted, at the time of its enlistment, they provide, because the requirement is that they should be at least have 2,000 members before it can be enlisted as a political party by the election commission. और 209 क्या कहता है? 200 सर, अगर 208 एक बार और देख लें सर. A member of a political party shall, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any party office. Subsection 3. आपका बुनियादी तौर पे ये केस है 208(2) का, कि आपने अपने मेंबरान को ये मौका नहीं दिया कि वो इलेक्शन लड़ सके. And in respect of Mr. Umar Ayyub, your lordship may see also subsection 4, the political party shall publish the updated list of its central office bearers and executive committee members by whatever name called on its website, and send the list and any subsequent change in it to the commission. नहीं, वो तो चलिए एक टेक्निकल चीज है ना. दो बातें हो गई ना. एक होती है बुनियादी हकूक. जी सर. बुनियादी हकूक आइन में भी दर्ज है, आर्टिकल 17 में भी, इलेक्शन का हक. अब एक टेक्निकल चीज है कि उन्होंने नाम भेजा नहीं भेजा, चलें भाई उसको तो आप नजरअंदाज करना चाहें या ना करना चाहें मुझे नहीं पता, मगर एक बुनियादी हक है हर शहरी का कि वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे, और ये बुनियादी हक हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर का भी है कि वो वोट का हक इस्तेमाल कर पाए और लड़ सके इलेक्शन किसी ऑफिस के लिए. नहीं तो फिर अगर हम ये हक छीन लें तो फिर तो डिक्टेटरशिप नेशनल लेवल पे भी हो जाएगी और निजी लेवल पे भी हो जाएगी. जी मेरी मर्जी मैं जो करूं. And that is why, my lord, in section 209, the requirement. ये सब पॉलिटिकल पार्टी से आप बराबर का शुरू कर रहे हैं ना? Yes, my lord. There is. In my instructions are that
मगर इतना माइन्यूटली और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी आप रिकॉर्ड इसी तरह देख रहे हैं इतना माइन्यूटली? Yes, my lord. सर ये अभी वहाँ भी अनअपोज आते हैं या वहाँ आपने My lord, and we have delisted today. अनअपोज जो आ ये रहे अभी हमने एक डीलिस्टेड का केस अभी जी देखा सर, था। हम ये अभी मगर एक बात जो up to today में शायद जाती है कि आपने ये इशू उठाया था जब पीटीआई खुद हुकूमत में थी, My lord. तो ये एक मेरे ख्याल में एक वजनी बात है। My lord. ये नहीं कि एकदम से हुकूमत से गए तो आप इनके पीछे पड़ गए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे आई डोंट नो, मे बी My lord, that is our respectful submission and reply to the query of my lord Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar for various violations. Even today, 13 political parties have been delisted. And one in the earlier part of the day. चलें खैर उसकी बात ना करें, कल को हमारे सामने होंगे। जी सर, तो जी वो मगर ये बस हम देखना चाहते हैं कि भाई आपका ये कोई पिक एंड चूज वाला एटीट्यूड ना हो। जी सर। अच्छा, तो असली बात इलेक्शन की आ गई ना बस। जी सर, and then ये माइनर चीजें तो चलें ठीक है। वो ये अनअपोज आने की जो रवायत है ये सिर्फ इन्हीं के पास आई है या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अनअपोज इलेक्शंस हैं? दूसरी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो My lord, I will take instructions in specific. पीछे इलेक्शन वाले इलेक्शन कमीशन ये अनअपोज जो है और पार्टीज भी आते हैं या सिर्फ यहीं पे ये रिवायत कायम हो गई है और आपकी दूसरी पार्टीज में इलेक्शन होते हैं प्रॉपर या वो भी इसी तरह होता है? रिकॉर्ड देख के फिर बता सकते। जरा चेक कर लीजिएगा कल। चले आप देख लें। The submission is, my lord, that the objection. Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209. A political party shall, within 7 days from completion of the inter-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held, and it's very important, my lord, in accordance with the constitution of the political party. And this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable, in accordance with the constitution of the political party. And if your lordship may then straight away proceed to section 215. 215, my lord. Eligibility. Yes, my lord. Anything notwithstanding. ये आपको भेजा उन्होंने सर्टिफिकेशन? My lord, they did. वो किधर है, किस सफ़े पे है? And that is on the basis of that we proceeded to issue them a notice, and thereafter these proceedings took place. ये 440 या 441 पे गए। My lord, if your lordship may graciously please. 440. This is, my lord, page 440, letter to the ECP from PTI stating that the intra-party elections took place on 2nd of December 2023. This is in part 2. एक सेकंड, ये जो इनका फॉर्म है ना, ये दोबारा बताइए। My lord, this is सर्टिफिकेशन फॉर्म page 440, part 2. फॉर्म 65 पेज 66 पे है। जी सर। तो आप पार्ट 1 देख लेना, वो जो चीफ साहब पूछे पेज 66 है पार्ट 1, पेज 66। ये सर्टिफिकेशन, हाँ, ये फॉर्म 65 डालना है ना, ये फॉर्म ये 65 किधर है? फॉर्म 65 ये यही है? नहीं, यही फॉर्म। जी जी जी, ये फॉर्म वाली बुक है हमारे पास रूल्स में। जी सर, ये रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्म है, that is there in the rules. ये वाली फॉर्म 65 निकालिए। रूल्स की किताब में है ना फॉर्म? जी सर, दिस इज अंडर रूल 158(1). 168 पे फॉर्म 65। जरा ये पढ़ लें। My lord, yes. Form 65, certificate regarding intra-party elections. I such and such office. नहीं, इनका एक्चुअल वाला पढ़े ना, पेज 68 पे। Page 68, 66. This is Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections
13/6/2017 declared invalid the names, designations and address of the party leaders and all other office bearers along with their attested copies of NICs elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of party offices. ये किधर है? ये तो सर because this नहीं इन्होंने लिखा है they have said they are unopposed, so therefore जी यही तो ये कैसे कह रहे हैं कि the number of votes cast and the number of votes secured ये कैसे कह रहे हैं? ये कौन सा इसके साथ मुंसलिक किया है इन्होंने? nothing, because all the certificates, क्योंकि देखिए एक जगह तो आपने पढ़ा था कि unopposed आए, इधर ये तो कह रहे हैं कि नहीं votes cast हुए और number of votes secured by each candidate. If your lordship takes a look at what they have filed, उधर तो नहीं लिखा है कुछ. That is from page 79 onwards. Your lordship, sorry, even before 3 का जवाब किधर है? रोमन 3 का सर जो इनका अपना डॉक्यूमेंट है वो पेज 78 पे है, अगर आप देखिए 8. So under the ये तो सारा उन्होंने लिख दिया अनअपोज. वोट्स के नीचे अनअपोज लिखा है. बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन PTI अनअपोज. दिस लिस्ट रोमन 3 है, वो कहता है, और आई थिंक ये फॉर्म 65 भी यही कहता है कि एक्चुअल वोट्स होंगे ना, कि आपको 10 वोट मिले उसको 100 वोट मिले जो भी होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट एंड द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कंटेस्टेंट फॉर ऑल ऑफ पार्टी ऑफिसेस. तो ये पेज 79 पे भी देखिए जो इस वक्त बात चल रही थी उमर अयूब खान साहब के हवाले से कि वो कब इलेक्ट हुए हैं, वो तो इस वाले में पेज 79 पे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल अनअपोज. ये तो इलेक्शन के बाद आए ना. जी. तो उससे पहले सेक्रेटरी जनरल का जो सवाल था वो कब अपॉइंट हुए थे? सर देयर वाज अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स. नहीं ये देखे ना, इसमें सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स की जो लिस्ट है ना पेज 79 पे. जी सर. उमर अयूब खान डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल वोट्स अनअपोज. जी सर, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd of December. योर लॉर्डशिप इज राइट. उससे पहले साइन कर रहे हैं ना सेक्रेटरी जनरल की. जी सर. मुझे एक और खत दिखाया था आपने, वो दिखाइए जी कि आई रिजाइन तो इनको अपॉइंट कर रहा हूँ. ये गौर साहब की सिग्नेचर के बाद 86 पे तो नहीं, अभी दिखाया था मैं कहीं. उससे ये क्वेश्चन लिंक हो रहा था ना कि आपने कहा उनकी अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर बताया नहीं है या अपॉइंटमेंट का कोई लेटर नहीं है रिकॉर्ड, तो इसलिए ये सवाल आपसे. आपने अभी हमें बताया था वो एक खत था. I'll just give your lordship the page 89. Sorry, 86 नहीं. Page 89. Part 1 again, my lord. ये देखें ना, ये है 28 नवंबर 2023 का. ये इन्होंने अपने मतलब ये तो पहले का है. जी सर. इलेक्शन से पहले का. तो ये कब बने, कैसे बने, ये नहीं पता आपको? Sir, he was never. Your lordship has seen the law. आपका मौक़िफ़ ये है कि असद उमर ही आज सेक्रेटरी जनरल हैं. जी, चूंकि दिस इलेक्शन, और अगर वो पार्टी छोड़ गए या नहीं है तो कोई तरीकेकार होना चाहिए किसी और को अपॉइंट करने का, जो इलेक्शन होना चाहिए. जी सर. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो पहले उनका इलेक्शन होगा, फिर वो इलेक्शन फेडरल इलेक्शन क्या होता है, फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और 6 और इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे जो बॉडी को बनाएगा जिसके तहत इंतखाबात होंगे. चलेगा ना मामला? यस मैडम. Because what your lordship have from page 78 to 87. ये सवाल तो इनके लिए हम पूछेंगे इनसे. आप कह रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने. अब हम ये सवाल पूछेंगे कि किया या नहीं किया, वो सुन भी रहे हैं. ठीक है. और आपका कोई अगला पॉइंट? So we show that from 78 to 87 they were all unopposed. Our submission was, and the election commission order which is there with your lordship. एक और बात जो है जी, आपने कहा ये हमने आज खुद नहीं किया, आज खुद भी आपने किया था और इनके अपने कंप्लेंट्स भी आए. जी सर. इनके अपने फाउंडिंग मेंबर्स वगैरह की. सर हमें भी तो इलेक्शन लड़ने दो सर, बेशक हार जाएं. अच्छा मखदूम साहब, ये इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाए उनका तो हाउ इज दैट पब्लिसाइज्ड? हाउ वुड एवरीबडी कम टू नो के इलेक्शंस हो रहे हैं इनके? व्हाट्सएप फैसिलिटी तो सबको अवेलेबल नहीं है. पब्लिक नोटिस हुई है, कोई अखबार, कोई कानून में कोई शिक है या इनके अपने रूल्स में कोई शिक है? The law only provides that they should be held in a fair and transparent manner. में कुछ है
Constitution may, I haven't come across a provision which provides a particular method, but the law which exists, the law says there should be in a fair and transparent manner where persons should be given a right to participate, and that's there in 208, which we, and 209, not 209, 208, which we just read out to you, Lordship. अच्छा कोई स्पेसिफिक शिक नहीं है रूल्स में इनके आपको अखबार में नोटिस देना है या क्या करना है? No, my lord, that's not there. Conducted in accordance with their कि अपने रूल्स Because they have to conduct it, my lord, in accordance. रूल्स में आपके इलेक्शन रूल्स में कुछ ऐसी बात है? इलेक्शन रूल्स के अलावा इनके अपने रूल्स भी लगे हुए हैं जी, वो हाँ इनके अपने रूल्स हैं, वो देखिए अभी नजर पड़ी थी मेरी that कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखे ना इनके जी जी सर बिल्कुल लगे हुए हैं. But our submission is that these rules were to be made by the Election Commission itself for its purposes. It couldn't change the party constitution. They couldn't, under these rules, bring in someone who was not entitled to come in through the party constitution. rules. Provision कहाँ है? Constitution में. अब्दुल साहब अगर इन केस इन द मिडल कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिस तरह इस पार्टी के साथ हुआ, इन द मिडल इनके सेक्रेटरी जनरल चले गए उमर असद साहब, impression ये मिल रहा था as if he has left the party position, not the party. तो ऐसे के लिए कोई है इनके रूल्स या एक्ट में इनके कुछ ऐसा है कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकती है? The Constitution, your ladyship, deals under section 512 on page 141 with the election of office bearers, and then कैसे आता है? Party which my lord Mr. Muhammad Ali Mazhar was referring to, they, my lord, are framed by the Election Commission under Article 9, paragraph F.1 at page 192. हाँ उसमें देखें इनके रूल्स के अंदर कोई तरीका दिया है पब्लिसाइज करने का? No, your lordship, because they develop their bylaws, internal working in accordance with the constitution and notify the where is the document of rule? मुझे वो बताया ना, वो मिल नहीं रहा, वो इसमें है इसमें. Rules set page 99. They begin with 98 and the They're not part of ये तो 99 ये है ना इलेक्शन रूल्स इनके 98 के ऊपर हैं. ये आप देखिए. Your lordship will notice two things immediately. These have been brought forward by them now. They are not a part of their constitution, and the election commission, they were not submitted to the election commission. उसमें कुछ फर्क आ गया है? Sir, yes. Because the statute says the election has to be held in accordance with the constitution, not in the bylaws. Because your lordship इसमें देखेंगे अगर ये election rules 2020 हैं ये तो these are PTI own rules. My lord. इसमें इन्होंने कहा है कि वेन्यू को हम अनाउंस भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि लिबर्टी टू चूज वन वेन्यू फॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शन और सेपरेट कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी एंड अदर अरेंजमेंट एज माइट बी रेलेवेंट. द वेन्यू में बी नोटिफाइड सेपरेटली और एज पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम. तो ये जो वेन्यू की बात हो रही थी अभी इससे पहले वो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है. नॉमिनेशन के लिए रूल 6 में एनी वेरीफाइड वोटर में propose or seconded the name of any candidate as chairman. These are illegible copies. Chairman on form 1. The nomination form may be filed by the candidate by his proposer and seconder before the returning officer. ये है इसके अंदर rules 20 के अंदर. Any verified voter may propose or second the name of any candidate. नहीं तो आप कह रहे हैं कोई नया मंशूर इनका बना है?
No, my lord, what happens is that... आप कह रहे हैं मैं मानता नहीं हूं मगर कोई नया मंशूर है. No, I'm saying, my lord, the constitution is the constitution of 2019. The law requires that the elections should take place in accordance with the constitution. वो तो हम समझ गए, मगर फिर आपने अभी कुछ जिक्र किया कि इनने कोई नया मंशूर इनका मौकिफ है. These rules of 2020 are framed by the Election Commission for its own internal working. That is there on page 192 of your lordship's file. They specifically say 192. Under the heading functions, after number 6. 192? Page 192, part 1, my lord. वो तो फेडरल इलेक्शन कमीशन. जी सर, उसका अगर आप... ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है. Sir, if your lordship looks at the bylaws को बता रहा है. These are not the rules. Bylaws for... Sir, यही है. Sorry, I missed the point. Sir, the rules which are here or the bylaws which are here... नहीं, जरा एक सेकंड, जरा वजाहत कर दीजिए. आप जब रूल्स बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? No, PTI के own PTI rules. फिर आप ये वजाहत कीजिए ना जरा. My lord. जी. So the under the heading functions F, your lordship will see F.1, the Federal Election Commission shall develop the bylaws for its internal working in accordance with the constitution and notify the same on the website. तो आइन इनका वही है. आइन वही है. आइन नहीं बदल सकते. अपनी इंटरनल वर्किंग के लिए नहीं बदल सकते हैं. कोई बदलना चाहे बदल. मतलब then they have to amend it in accordance with the procedure. Amendment file करनी पड़ेगी आपके पास. And then they have to file. What turns on this point of yours? My lord, that these rules as such will not trump the constitution. Which rules are these? These the rules framed by the Election Commission of PTI. Where are those? Those are at page 98 onwards in part 1. So this probably will be their defense. I take it. This may be their defense. They rely on Rule 28. This, I presume, will be their defense, correct? My lord, yes, and it says, your lordship may see, this probably... What comes in the way of fair and free elections with these rules? What is so offensive about them? My lord, that you don't like them? My lord, I'd like to point out to your lordship Rule 28. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify Ad Hoc Election Commission to propose to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. So इसकी तारीख क्या है इनके रूल्स की? 2020 They simply say 2020. We don't know the date, my lord. Even if we read this, how does it change anything? My lord, they are not relying on these rules because this is regarding ad hoc. They don't say I'm an ad hoc commissioner. They're saying I'm a full-fledged commissioner. In the ECP, they relied on 28. Sir, should notify ad hoc election commission. So this is not their case of ad hoc. I make this submission because before the ECP, they relied on this Rule 28 to say. I don't understand. To say that the fallback position is that you could regard him as an ad hoc. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify Ad Hoc Election Commission to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. तो पहली बात तो वैकेंसी होना है. अगर हम इसको मान भी लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग. दूसरी बात है सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, मगर फिर भी वन मैन शो तो नहीं होगा. फिर भी मेंबर्स तो होंगे ना. फिर भी and as many members as may be necessary. Yes, my lord. तो वो कह सकते हैं जी चलिए हमारे पास 6 नहीं है, 4 कर लेते हैं. For instance, I don't know. There are two submissions over here, my lord. One, that even this Rule 28 does not envisage a one-man commission. The second submission is that under Chapter 9 on page 192, the requirement of the Constitution is that such members are to be co-opted by the Commission itself. That's one. And secondly, that insofar as the Chief Election Commissioner is concerned, he can't be co-opted. He has to go back to the electoral process. So
they are resting the case on Rule 28 or some other one? Before the commission, they rested on Rule 28, and the commission, therefore, in its order says... No, anything else which may save them, help them, which you are opposed to? My lord, your lordship may see page 61, part of the Election Commission's order. No, just tell us, we don't want to see it. Yes, my lord, there they rely on it. And let's be fair, is there anything here which will help them? My lord, our submission is no. Our submission I'm is... asking as counsel, not as representing ECP. My submission as counsel is that the rules, insofar as they are inconsistent with the Constitution... Let's say they are proper rules. How will it help them? Please tell us those provisions. Our submission is that even if they are, then under Rule 28 itself, the body has to be an election commission. It can't be one person. So they have to explain to you. दूसरी बात आप ये ad hoc नहीं कह रहे हैं कि मैं ad hoc हूँ. That's the third one. हो सकता है कि जैसे हमारे कलीग ने पूछा कि भाई कभी-कभी हो जाता है कुछ for various reasons, emergency ये वो वगैरह, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो ad hoc चले उन्हें अपॉइंट कर दिया, मगर यहाँ वो ad hoc का केस ही नहीं है, तो आप उनका केस क्यों प्लीड कर रहे हैं? I am only pointing out that in paragraph 16 of its order, the Election Commission notes that they admitted... I don't think that's a relevant point. No, the Election Commission noted that they admitted that this was in violation of the Constitution. Have you concluded? My lord, may I draw your lordship's attention to a few paragraphs of the Election Commission's order? I may not read it, your lordship. Before that, can you show us the order and the challenge again now? The High Court order, my lord? Ji. My lord, yes. That the impugned order of the High Court is at page 28. The operative part starts at the foot of the page for the reasons, part 1, page 28, part 1, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein. Yeah, but where do they say anything about the elections? About? In the whole dispute, as I've understood it, I may have understood everything wrong, is the validity of 2nd December election. Where is the declaration of the High Court saying that they were in accordance with law or their constitution, or they were not? They don't say anything, my lord. They simply... First you have to hold that, then whether the symbol of bat will be given or not, that is a subsequent relief. First the initial declaration has to be there. Where is that? That is not... Let's read it again, the whole order. We hold and declare that the impugned order of the Election Commission of Pakistan dated 22nd December 2023 be passed in case number as illegal, without any lawful authority and of no legal effect. But that still doesn't mean that there has been an election. No, it doesn't. Order उड़ गया. अब number 2 पढ़ें. The Election Commission of Pakistan is directed to forthwith publish the certificate filed by the petitioner on its website in terms of section 209 of the Election Act 2017. इससे पहले declaration कहाँ है? Election were in accordance with law. There is none, my lord. So this will only follow that declaration. There is no such declaration. Yes, the elections were held proper, whatever, and then issue the certificate and issue the election symbol. But I find that declaration missing. That is missing. My lord, I can only presume. They presume to be acting. The presumption appears to be that under 209, under section 209, once the certificate is given, that is conclusive of the matter. The Election Commission cannot see whether the elections were fair or foul, proper or improper, in accordance with law or otherwise. जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं. देखिए इस सब चीज का जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, कुछ चीजें टेक्निकल है, ये करो, ये कागज फाइल करो, सेक्रेटरी जनरल ये फला, चले वो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं. एक बुनियादी चीज है जमहूरियत मुल्क में भी होना चाहिए और जमहूरियत पार्टी में भी होना चाहिए. ठीक है, आपको टॉलरेट करना होता है गिव एंड टेक, कभी आपके मुखालिफिन भी आ जाते हैं कभी, तो बुनियादी बात तो जमहूरियत की है. आर्टिकल 17 तो यही कह रहे हैं ना, तो आर्टिकल 17 का डिक्लेरेशन तो दें. हाई कोर्ट आपने कहा ये आपका इलेक्शन मुस्तरद हम करते हैं, हम इसको नहीं मानते, ठीक है, आपने गलत कर दिया, तो हाई कोर्ट फिर इसको ठीक करे ना कि नहीं ये इलेक्शन सही थे.
That finding is not there. अगर वो इलेक्शन सही थे फिर उनको सर्टिफिकेट भी उनका मानना चाहिए, फिर उनको इंतखाबी निशान भी देना चाहिए, फिर तो सब चीजें फॉलो करेंगी ना थ्रू. That are consequential reliefs, not the main relief. This is the exactly problem that we are facing. Yes. We do not know where their reasons will go. उन्होंने कहा reasons amplify कर सकते हैं, but this is a fundamental prayer which seems to be subject to, I'm saying it aloud, so they make a note of it and they address it. Where is that declaration? Because the prayers you will see kindly declare that the elections held on 2nd of December 2023 were in accordance with the constitution of the political party and in accordance with law and the whatever. Because they will amplify the reasons within the ambit of the short order. And then the next step will be and consequential relief, including accepting the requisite certification, issuing the symbol, doing 500 other things if they're required to be done. But those can follow, or even if they're not written, those can be implied. But the declaration can't be implied, or can it be implied? My Lord, there is no such declaration. And also, if your Lordship looks at the petition, they didn't even pray over there that the elections were held properly. Are you sure? There is no petition. My Lord, your Lordship will see page 49, which is the prayer clause. Please read them. My Lord, hold and declare that the impugned order is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof, set it aside forthwith. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of... IPE क्या होता है? My Lord, intra-party elections. I don't know why people don't write the whole thing, intra-party elections. On the basis of any objections, filed by any persons were quorum non-judice, illegal and without lawful authority. I can't understand. Hold and declare that proceedings by ECP to question the validity of the IPEs on the basis of any objections filed by any persons were quorum non-judice, illegal and without lawful authority. Why? I mean, anybody can go and complain. So I was just reading why. My Lord, because I don't understand this prayer. Shall I next go to the C prayer? Yes. Find and declare that election symbol has been illegal and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners, including Article 17 and Article 25 of the Constitution. Direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by Section 209, paragraph 3, in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order, so on and so forth. They have not sought the declaration. They have not, my Lord. The reason appears to be, if your Lordship takes a look at page 40. Because if they get a declaration, they may have left out C, D, E. Yes. And I would say the implied praise, and you have to do that once the declaration has been given of free and fair or whatever elections they've held, or in compliance with their own constitution. You see in paragraph A, I think yes. they will, yes, my Lord. Obviously they will respond to page 43. I will like to know their response. Authority. My Lord, they have challenged the authority as well as the jurisdiction. Now they has to explain us whether the ECP can check the inter-party elections or not at this stage, and whether it was a voidable or that is the central negligible. Point. I wanted to draw your Lordship's attention to ground A. इसीलिए इधर वो ऑर्डर आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट का लर्नेड सिंगल जज का. उन्होंने ये बात की कि ये फ्रेज उस वक्त मैं दे सकता हूँ कि मैं जब स्ट्राइक डाउन कर दूं इलेक्शन एक्ट के कौन से दो सेक्शंस थे जी 209 and 215(5). वो उनकी वहां तक तो बात अब समझ आई मुझे जाकर के कि उन्होंने क्यों कहा. अब शायद समझ आ रही है बात को. चले आपकी बात हम मौके समझ गए, कोई और बात नहीं है तो हम आगे बढ़े. But may I just show to your Lordship ground A? That is the case they are setting up, and that's why they are not seeking the declaration of the election. According to them, ECP has no jurisdiction
to challenge the internal appointments of officials of PTI or set aside PTI's intra-party election held on 2nd of December 2023 and declare them void. As such, the impugned order is not sustainable in law. ECP is not a court of law and cannot question the appointment made by any political party or examine the validity of a political party's intra-party election. But doesn't these prayers violate the constitution then? Our submission is yes. Because you are saying something, I'll do whatever I want to do. Yes. Yes. I mean, contrary to my own constitution, I don't know. I would want certainly assistance of Hamid Khan Saab. And be prepared to be clean bold, Mr. Makhdoom Ali Khan. My lord, may I just, 2 lines from this page, ground B, last 2 lines. They talk about the role of the Election Commission. Only role is to keep a record of the party's constitution and changes, then keep record of elected officers, record sources of funds and campaign finance. Now can you quickly go through the provisions of the Election Commission in the Constitution of Pakistan? My lord, start from there and proceed with the law. My lord, yes. Quickly. Yes, my lord. Your lordship may turn. I'm sure you're tired standing up, but my lord, please have the luxury of sitting down. But anyway, my lord, if your lordship may graciously take a look at articles 213 onwards is the Election Commission, but the relevant 230 or 230? 213, my lord. 213 on is are the provisions relating to Election Commission. The relevant one over here would be 218, subsection 3. No, but the whole, ye pura chapter elections pe. Ji sir. Part 7. Yes sir. And 218.3, 213 and 218, paragraph 3, it shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, in accordance with law, and that corrupt. ये तो general elections की बात है. Then sir, inter-party election का जिक्र है इसमें कहीं? Sir, इसमें नहीं है, सिर्फ एक तरह से आता है 219. The Commission shall be charged with the duty of, and if your lordship may turn to clause E, such other functions as may be specified by an act of Majlis-e-Shura Parliament. अब वो जो इलेक्शन एक्ट है उसको अच्छा, तो ये आ रहा है 219 E के जरिए. E के जरिए इलेक्शन एक्ट 2017. या तो उसको चैलेंज करें. यस. अच्छा, एक तो ये हो गया. अब बुनियादी हकूक, इन्होंने 2 बुनियादी हकूक का तस्करा किया है अपनी प्रेयर में. एक है 17 और एक है 25. My lord, on Article 70. एक जरा सी बात सुन लीजिए ना. 17 कहता है कि हर शख्स को इलेक्शन में वोट डालने का हक होगा और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक होगा. सर, इसमें तो कोई आपकी कोई राय, मनफी राय तो नहीं है ना? नहीं सर. हाँ? नो सर, नॉट एट ऑल. अच्छा, फिर 25 क्या कहते हैं? सबको आप बराबर ट्रीट करेंगे. सर, इस पे भी आपकी कोई? नॉट एट ऑल. नो नो नो. ये जो सिंबल वगैरह का जो जिक्र है, ये सारा इलेक्शन एक्ट में आता है. माय लॉर्ड, सिंबल का जिक्र कहाँ आता है इलेक्शन एक्ट में? इलेक्शन सिंबल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? चैप्टर 12 ऑफ द इलेक्शन एक्ट रूल्स मेरे पास. इलेक्शन 212 के बाद ही है. जी सर. आई में तो तस्कर नहीं है ना? नहीं सर. जी सर, एलोकेशन ऑफ सिंबल्स इज 214. The Commission shall prescribe a list of election symbols for allocation to political parties, and candidates and the symbols in the list shall be visibly and perceptually different from each other. 215. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local governments on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. If your lordship will see the next provision, a combination of enlisted political parties will get symbols
And then, if your lordship may see 5, if a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. Is it your case that the only reason political parties will comply with any direction of the Election Commission to hold election is when you hold this stick in one hand? Otherwise, they'll say, we won't hold elections. Otherwise, or is there some other mechanism also? My lord, there is a mechanism that if given the time frame in their own constitution, if they... वो तो आगे पीछे हो सकता है जैसे आपने अब वो वाली बहस तो हमारे सामने नहीं है आपने साल दे दिया उनको उस टाइम फ्रेम पे भी हम उनको सिर्फ फाइन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते वो छोटा सा फाइन है वो दे के आगे बढ़ जाएंगे बट इफ वी वांट टू एनफोर्स आर्टिकल 208 elections within a political party and 209 then the elections should be in accordance with the constitution of a political party. If we don't have the power under 215(5) then these provisions will be purely advisory in nature. There will be no obligation on political party to comply with it because this election. मुझे याद आ रहा है वो धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने कोई बात की थी पता नहीं उन्होंने कहा था कॉस्मेटिक है फिर उन्हें अपोलोजाइज किया कि लॉ इज नॉट कॉस्मेटिक आई डोंट नो व्हाट प्रोविजन देयर इज देयर वाज समथिंग मेंशन्ड देयर व्हिच टुक ग्रेट एक्सेप्शन टू दैट हाउ कैन यू टॉक अबाउट द लॉ कॉस्मेटिक यू आर बाउंड बाय द लॉ व्हिच गिव्स यू द पावर्स आल्सो एंड दैट्स पार्ट ऑफ योर लॉर्डशिप्स जजमेंट एंड वी विल प्लेस दैट जजमेंट ऑन द रिकॉर्ड दैट दिस इज व्हाट योर लॉर्डशिप दैट्स नॉट रेलेवेंट टू दिस केस सो इज इट My lord, it's relevant to this case and there are a number of other determinations by this honorable decisions by this honorable court where this honorable court has said that the election commission is a body which has been created to ensure that elections are held in a fair manner. No, not the general elections. Inter-political party वाले. My lord, intra-party पर भी judgment. वो वाले judgment दीजिए. साहब वैसे इसमें और भी कोई judgment है जिसमें ये the question of inter-party elections were made subject matter of any judgment. My lord, your lordship must see this. In which violation was treated so grave. My lord, if your lordship see where the observations are, this is PLD 212 Supreme Court. PLD 212 Supreme Court 681. PLD 12 ये आपकी बुकलेट में है? जी सर, टैब 8 ये वाली बुकलेट. ये आफ्ताब अहमद खान शेखोव केस आप कह रहे हैं ये कौन सा? My lord, नंबर कौन सा होता है? My lord, टैब 8. टैब 1. टैब 8. Okay. 8 means workers party. Yes, my lord. ये क्या फरमाता है? Irrelevant. My lord, paragraph 42, I'll read 40 later, but 42, the parliament has framed different laws to effectuate the above constitutional provisions and to regulate elections to the national and provincial assemblies. ROPA reiterates and further vests the election. In material terms, is a vast difference between ROPA and the present election act. My these lord, provisions, कोई खास फर्क है वही है. My lord, some of these provisions are new, but otherwise it's only 215 is new, otherwise all the rest. All the rest are the same, my lord, except for 5, subsection 5 of 215. But your lordship. No, has it been, was there in ROPA also 215.5? No, in ROPA there was no 215.5. 215.5 has not been challenged. No, my lord. My lord, regulate and check intra-part, your lordship will see further vest the election commission with the responsibilities and powers to inter alia regulate and check intra-party affairs and actions taken by candidates and parties in anticipation of and on election day, resolve all election disputes, declare the election void, so on and so forth. The last 3 lines, the law therefore entrusts the election commission with exclusive, broad and extensive powers to attend to all issues related directly and ancillary to the election process. Next case.
My Lord, my Lord, your Lordship's judgment in the Suomoto case number 7 of 2017, PLD 2019. दूसरी booklet Supreme Court, my Lord, it's in volume 1, tab 9. इसमें क्या आपने कहा? Sir, on page 343 of tab 9, paragraph 33, the Election Commission is a constitutional body and the Constitution stipulates that the Election Commission shall ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against. The Election Commission is also required to undertake such other functions as may be specified by an act of Majlis-e-Shura Parliament. Article 17(3) of the Constitution requires political parties to account for the source of their funds, and Section 211 of the Election Act demands that detail of election expenses be provided. The Election Commission confirmed that TLP did not account for its fund and election expenses, but surprisingly professes its helplessness because the law according to it is cosmetic in nature. And so this is what I recalled. The Election Commission should disabuse itself that constitutional and legal provisions are cosmetic. The responsibilities placed on the Election Commission by the Constitution and the law must be fulfilled. They are not optional. इसमें तो वो इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं है। नहीं, इसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस वाली बात नहीं, but there's a provision which आपके पास कुछ चल भी तो रहा था ना मैटर, हम अखबारों में पढ़ते थे क्या एक्सपेंसेस वाला केस, उसका क्या बना? फंडिंग या क्या? They found a violation, my lord. हाँ? They found a violation. नहीं, उसका बना क्या ना, हतमी नतीजा क्या बना उसका? जो कंट्रीब्यूशन वाला केस में हमने फाइंडिंग देखी, वो किधर है? वो सर वो उनको पता होगा। वो उसमें सर हमने रिपोर्ट दी थी। ये क्या हतमी फैसला क्या हुआ इसमें? फैसला रिपोर्ट नहीं पूछ रहे। The commission found out that there were funds that were received from sources prohibited under law, and a show cause notice issued, but उसका final फैसला नहीं आया show cause का to my knowledge। That is still pending। फैसला नहीं आएगा क्या मतलब? जी, कानून की रिक्वायरमेंट ये थी कि पहले इलेक्शन कमीशन ये तयन करेगा कि क्या आया प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे आए हैं, अगर आए हैं तो शो कॉज करेगा। कमीशन ने शो कॉज कर दिया, उसमें फिर शो कॉज प्रोसीडिंग्स अभी तक पेंडिंग है, उससे कोलैटरल लिटिगेशन होती रही। और आई अंडरस्टैंड कि तो कब से चल रहा है? जी 2014 से। उसमें सर ये अभी एक सिंगल बेंच का फैसला था, सर विद योर परमिशन, और उन्होंने कहा कि आप एविडेंस रिकॉर्ड करें, which we have challenged that we have already undertaken the exercise and we need not to further record evidence. There is a judgment of a single bench of the Honorable Islamabad High Court. We have challenged that through IC. 9 साल हो गए अभी तक नहीं हो रहा है। There are multiple litigations. Our orders are challenged one after another, and there are. जी, and my lord, proceed. My lord, this is. How long will you take? I hope shortly. My lord, very short. PLD 2018, Supreme Court 189. 2018. Supreme Court 189. This is at tab 7 of this volume 1, which your lordship was just reading. Page is 238. Relevant page is page 238. Your lordships on page 238 notice clause E of article 219 of the Constitution, and the last 4 words on this page. The ECP is an independent and autonomous body which exercises executive and regulatory powers derived from the Constitution. Though it has the power to appoint election tribunals and so on and so forth, my lord, the ECP itself is a supervisory body which exercises regulatory and administrative powers under the Constitution and the law. The next paragraph, my lord, the 5th line, your lordships, we have highlighted that for your lordships as well. Besides being a limb of the executive that is charged with the duty to conduct and oversee elections in the country, we find that the ECP must necessarily possess the power to collect facts, information and data that enable it to properly and effectively perform such duty. Such a capability represents the constitutional and inherent legal power of ECP. Therefore, in exercise of its powers under Article 6 of the PPO read with Rule 6,
6, the ECP has all the necessary authority to ask for and collect the requisite information and facts that enable it to decide and determine whether the contributions or donations accepted by a political party are prohibited under Article 6(3). Without such power, we are of the opinion that the ECP's power to decide as to whether a political party is receiving contributions or donations from sources prohibited under Article 6(3) EBIT would for all. Which party was this? My lord, it was the case of PTI. This was a case. ये judgment तो ये 18 का है, अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ है? Sir, not as yet. Right? Such a result would be against the clear command of Article 17(3). Are you disregarding a judgment of the Supreme Court? No, my lord, we are not. We have then proceeded accordingly. That those proceedings have taken place, which my learned friend Mr. Ahmed Hassan was informing your lordship about. The show cause proceedings are still pending. My complaint to the commission that the funds were being. Facts पे नहीं जाए ना. अभी तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है ECB को कि काम करो इसका, तो क्यों नहीं किया? ये तो 2018 का जजमेंट है. For the reason stated कि जी collateral litigation है, there is no other reason to my mind. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. जी बिल्कुल सही कहा. चलिए अगला बताइए. Paragraph 47. We find it hard to fathom the contention that the intention behind the PPO and the rules is to take away the administrative and regulatory power of the ECP derived from the Constitution to call for any record, information or data from a political party to ascertain the sources of its contributions and donations and to place such power exclusively in the hands of a party appointed chartered accountant. Learned Counsel has not been able to show us from any provision of the PPO and the rules framed thereunder, nor from any other principle of law laid down by this court, that failure by the ECP to object the audited statement of account of a political party before its gazette publication would tantamount to the acceptance of the said accounts, and that thereafter the ECP would become functus official. My lord, 48 also I just refer, that has been highlighted. My lord, the next judgment is at tab 13. That's a PLD 2018, Islamabad 300. That's a judgment of a learned judge. We have highlighted the relevant portions. यही तीन आप कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, या कोई और भी है? These are cases, 35 cases which ECP filed CPs. जी वो करें. जी किधर गया? My lord, may I just submit that to conclude on this proposition, our respectful submission is that the duty of the ECP to declare that a political party is ineligible for an election symbol when it fails to hold intra-party elections in accordance with its constitution is actually made redundant by the judgment of the Peshawar High Court, and so also are sections 209 read with section 215(5). Because if we do not have that power, then it has far-reaching consequences. We cease to be a body which can have any control over intra-party elections. My lord, this was the submission on this. There are couple of. ये आपका राइट ऑफ रिप्लाई भी होगा ना? जी सर. अब आप हमें भी जरा. May I just point out one thing that recently आप कोई और बात तो बताएं. My lord, the preliminary objection that they have taken, I can. देखिए हम आपको जो आप अभी तक आपसे बात समझ आई है, वो सारी बात घूमती है इनकी अपनी इलेक्शन के बारे में. ठीक है, ये इन्होंने केस जरा कहीं और ले गए, पर बुनियादी बात जो आपका एतराज था इनका, और यह एतराज आज से नहीं, मतलब जब ये हुकूमत में भी थे कि भाई आप इलेक्शन तो करा लें अपनी पार्टी के, तो उन्होंने कहा जी हाँ देर हो गई वगैरह वगैरह, हमें साल दे दें, आपने साल दे दिया. फिर आपका कहना ये है कि आपने जो इलेक्शन कराए सही नहीं है. ये बुनियादी सी बात है. अगर वो इलेक्शन सही है तो मेरे हिसाब से मे बी सब्जेक्ट टू करेक्शन, बाकी रिलीफ विल ऑटोमेटिकली फॉलो. फिर सर्टिफिकेशन आप लाजिम है, आप पे इनका इंतखाबी निशान देना लाजिम है आप पे, वो तो मेरे ख्याल में ऐसी चलेंगी. और अगर ये नहीं दिखा सके कि इलेक्शन उन्होंने सही तौर पे किया है, तो शायद इनको फिर कॉन्सिक्वेंस सफर करनेंगे. अब दो तीन कानूनी बातें भी खड़ी हो गई हैं. एक बुनियादी कानूनी बात है, खान साहब आप ये नोट कर लें, एक बुनियादी कानूनी बात है कि
डिक्लेरेशन इन्हें नहीं मांगा कि भाई जो हमने इलेक्शन कराया है बिल्कुल सही है। वो उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ पे चले गए। कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ को उर्दू में क्या फरमाएंगे? नताइज और अवामिल। ठीक है, तो वो ज्यादा फोकस उधर चला गया है, वो बेसिक बात खत्म हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो अभी हमने अच्छा एक बात हम वजाहत कर लें, अभी मालूम किया था कि जो ये 2 पिटिशंस थी, ये अभी मजीद मालूम हुआ है कि वो आज लगी थी और आज उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब ने तारीख ली है दोनों में। ये आज की पोजीशन है। तो जब एक मसला वहां खड़ा हुआ है तो वही मसला पिशार जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो तीसरी बात जो आई है वो इसको नजरअंदाज कर दें कि अगर ये पिटिशन ना भी थी, पिशार हाई कोर्ट के पास टेरिटोरियल या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन था। इस पे आपने हमें कोई बात नहीं मदद की। सर मे आई वेरी क्विकली माय लॉर्ड, समीर का कहना है क्योंकि हमने इलेक्शन इधर करा है इसलिए पिशार हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। ये इसको सेक्शन 20 CPC जो है ना, द कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और होली अराइज, basically that has been interpreted in so many judgments of the Supreme Court with regard to Article 199 and territorial jurisdiction. उस पे भी आप अपना, क्योंकि वो आपने रेस किया है तो सर the direct judgment on the point and observation of this honorable court is in the case of Lieutenant General Salahuddin Tirmizi versus Election Commission of Pakistan, where first the is it in the books? My lord, it's there. It's tab 6 in volume 1, and the relevant observation is at page 760. PLD 2008 Supreme Court 735, page 760. I have highlighted the portion, my lord, but I'll read it. 760. Was there some previous cases also? Yes. In the present case, Election Commission, while discharging functions in connection with the affairs of Federation within the territorial jurisdiction of Islamabad High Court, passed an order in respect of NA20 Mansehra, a constituency of province of NWFP. Therefore, the objection relating to the jurisdiction and maintainability of writ petition before the Islamabad High Court would be of no significance. It may be pointed out that in the light of principle laid down by this court regarding the exercise of such jurisdiction in such situations, the order passed by the ECP, which functions at Islamabad in respect of the constituency of province of NWFP, would be challengeable both before Islamabad High Court and Peshawar High Court. This concurrent jurisdiction is, however, subject to the rule of propriety, according to which a High Court having jurisdiction in a matter, if it has exercised such jurisdiction, the other High Court which has also jurisdiction in the matter may restrain from exercising its jurisdiction. In view thereof, in the present case, propriety demanded that subsequent order passed by Election Commission of Pakistan should have been challenged before the Islamabad High Court, and the jurisdiction of Peshawar High Court should not have been invoked. Ji sir, they are all there. This I point out because this is directly an Election Commission case where it was first challenged. The first order was challenged in Islamabad. The second order was challenged in Peshawar High Court. The Supreme Court they have also said that the concurrent jurisdiction for the both courts. They've said there is concurrent jurisdiction with both courts, but propriety is that if you have gone to a court once in the case of the first order, then for the second order you should also go to that court. In concurrent jurisdiction, because the order was passed for the constituency of KPK, therefore they held that the concurrent jurisdiction. Yes, my lord. But what do you say in this case where the order has been passed at Islamabad and the elections and but this order is for the whole of Pakistan. This order is for the whole of Pakistan. It can be challenged. Now, देखिए उनके elections. Suppose you found that the elections of a political party, to the extent of the federal offices of Punjab, Baluchistan were all right, but only the Khyber Pakhtunkhwa, these persons who came said कि जी हमारे यहाँ सही नहीं हुआ. So that would of course give maybe Peshawar High Court. You are not saying that because the Election Commission of Pakistan is based in Islamabad,
the primary jurisdiction is Islamabad. That's you're not saying. No, I am not saying that. What I am saying is that when I passed the first order invalidating their election. Where did you pass that order? 23rd, 11th. Where? My lord, that order was passed in Islamabad. No, both orders were passed in Islamabad. Both orders were passed in Islamabad. First time round, when the order is passed on 23rd of November, they go and they challenge it before the Lahore High Court. Second time, those elections were held in Lahore? No. नहीं, वो जो PTI के इलेक्शन वो जो 2022 वाले थे वो कहाँ हुए थे? जो अंडू हो गए बाद में. According to ECP's instructions, they were in Islamabad. First election. Yes, according to ECP. My lord, the second time round, when the election commission. देखिए अब हमारा एक और भी ऑर्डर पास हुआ है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया, वो पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन रुकवा दिए. अपनी टेरिटरी तक तो आप ऑर्डर करें, मगर पूरे पाकिस्तान में आई डोंट नो उसकी कोई रेलेवेंस होगी या नहीं. वो मैटर पेंडिंग है अभी या नहीं पेंडिंग है? My lord, that matter is pending. That is your lordship's order in. बहुत जल्दी में लिखा गया on I think the day I was leaving. 16th of December को लिखा है ना? 15 दिसंबर का ऑर्डर है. I was leaving on 16th early morning. It's in CPL civil petition number 4365 of 2023. उसकी रेलेवेंस कोई है इसके? My lord, the relevance is from the point of view to show to your lordship in terms of the preliminary objection, but may I come to that in a minute as I come to that preliminary objection. On this issue of propriety, this honorable court has said if you have challenged the order of a constitutional body in one high court, then when that constitutional body understood that point passes the second order, go to the same high court. My lord, the second submission is that order will in rem or in personam. My lord, that order according to your lordship's jurisprudence is an order in personam. But if your lordship takes a look at then this of Mr. Justice Jawad Hassan's judgment in the Lahore High Court, where he says this petition is not maintainable unless you challenge the provisions of 215 paragraph 5. Now, my lord, if that is done, if the vires of a petition is challenged, then a notice to the Attorney General. There is very common phenomenon of this aspect of the case. Sometimes one levy imposed by FBR that is declared illegal by Sindh High Court, but the said levy is affirmed by the Lahore High Court. Even in the case of Semini, there is a distinction of the judgments. One High Court has declared it ultra vires, and while the Sindh High Court has declared it intra vires. So in both situations, the judgments are pending and appeals are pending in this court to reconcile. Yes. So this is also an aspect of the case. What is to be done if the one High Court declares this and second High Court declares this? My lord, there is a law, is a federal piece of legislation. I point out. If I may just think aloud, those importers, there may be importers in Lahore, there may be importers in Karachi. So they have to show some nexus. I mean, if the importer is based in Lahore and the port of entry is Karachi, I don't think Baluchistan High Court will have jurisdiction. Right, man. Yes, man. So probably you have to show some nexus with that territory. Why you're going to this and not going, and you're not shopping for what is the word? Forum shopping. Forum shopping. So maybe there is this thing, but I don't think we need to go into that detail. Also, I want to make it clear that we will not consider, because nobody's raised this point, the vires or otherwise of section 215.5 or any other provision, because that's not under challenge. Yes, ma'am. And Lahore High Court has made observations that this can only be done if they are challenged, but has not given a view on the matter that they are in accordance with the constitution or not. So that is for another day. Yes, ma'am. Yes, my lord, because if that was the case, I would say in particular. Don't say it. All right. But say it when that day comes. Generally, an issue of. No, not vires, not vires. But generally, if there's an issue with regard to the interpretation of the constitution, even then, under Order 27A. नहीं वो बात तो अब तो बदल गया, अब तो 5 मेंबर बेंच बनना होगी ना. अब तो वो आईनी उस पे हो जाएगा ना इंटरप्रिटेशन पे. I'm saying in the High Court, my lord. हाँ वो 27
27 A की वो तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अगर मैं ये रिलीफ उस वक्त दे सकता हूँ जब ये चैलेंज हो, और ये चैलेंज नहीं हुआ है तो उसको वो तो ठीक है देते कि जब वो चैलेंज होता। बट इवन द पेशावर हाई कोर्ट जजमेंट पॉइंट लिया वहाँ भी नोटिस नहीं किया आप कहते हैं। नो नोटिस टू द अटॉर्नी जनरल बाय द पेशावर हाई कोर्ट। व्हाट? No notice. The federation was not a party. दिखाएं जरा ऑर्डर दोबारा। Sir, page 28. Page 28. This is one of your grounds in the petition. In the petition. I must compliment my brother. He's read the petition. I didn't get opportunity to read it. इसमें पहले बताएं parties किधर हैं? Sir, the parties are there. On which page? Petition कहाँ है? Sorry. Petition, my lord, is at page 30 to 53. If your lordship may. I want to see the array of yes, parties. They are there on page 31. ECP is page Election Commission of Pakistan, and then they're all, these are the private complainants, my lord, the PTI complainants, and that's it. Pro forma respondents. No former respondents हो गए. And then your lordship will see, they go all the way. What is the point involved? They go all the way to 15. You were on notice. My lord, Election Commission is a party. Election Commission is a party. My submission is that if a question arises with regard to the interpretation of the Constitution under Order 27A of the CPC, a notice to the Attorney General is mandatory in view of the... No, but if we agree with you, then we can't hear this case. Then it will be a 5-member bench. No, my lord, my submission is this. ये आप सिंपल कह सकते हैं कि नोटिस देना चाहिए थी 27 A की, बस बात खत्म। बस यही बात खत्म। मजीद बात करेंगे? नहीं, मजीद नहीं कर रहा। वो फिर आ जाएगा सेक्शन 4 है या क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। जी सर, then it will require 5-member bench, not less than 5 members. चले वो आप काबिल वकील आपके नहीं थे उधर? So there, I hope you're not saying that the council representing the Election Commission of Pakistan before the Peshawar High Court was not a Kabil. No, the Election Commission don't say this. The Election Commission of Pakistan was very competently represented. I'm just pointing it out, my lord. The other, that was just a side note. My lord, saying so. Other issue is that a number of respondents were not even served. Respondents number 3, 4, 5, 9 and 11 were not served. Private respondents को सुना या नहीं सुना? The complainants before you. Some were heard, but the following number 3, 4, 5, 9 and 11 were not even served. इनके वकील तो थे, देखें 2 and 7 के भी थे, 8 के भी थे, 10 के भी थे, 12 के भी थे, जी सर, और 13 के भी थे। अब वो कोई सर्विस अवॉइड कर रहा है, इलेक्शन ही खत्म हो जाए। 3, 4, 5, 9, 11 के नहीं थे, but वो बात मेरे ख्याल में ज्यादा इलेक्शन मैटर्स में जरा लचक रखना चाहिए। अगर हम सब पे सर्विस को जान से अवॉइड करेगा कि इलेक्शन गुजर जाए फिर मैं सर्विस करूंगा। My lord, the last submission relates to the technical objection raised. My lord, when your lordship goes back all the way up to the case of Javed Hashmi, your lordship will see it is reported as PLD 1989 Supreme Court. PLD 1989 89 Supreme Court, page 396. This is just to show your lordship the title of the parties. ये आपकी बुकलेट में नहीं है ना? Sir, ये बुकलेट में नहीं है sir. जी, इसमें because this was a preliminary objection raised. Now your lordship may just look at the title of the parties. This is a 5-member bench. Election Commission of Pakistan was the petitioner. तो आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड नहीं ले सकते हैं? That is the submission, my lord. How do you distinguish those two cases? My lord, that learned senior counsel has cited. My lord, in neither of those cases relate to the Election Commission. To start with, I would also seek your lordship's leave to place on record a list of 35 cases where your lordships are dealing with appeals filed by Election Commission. And your lordship may already also consider one point. Please give a list to Mr. Khan Saab. Khan Saab को भी दीजिए. जी. And pending तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, फिर भी आ सकता है। Disposed of की list. And your lordship may also see your lordship's judgment on 22nd. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, decided. जी सर, 2nd of January. Disposed of, I don't know what it means. It could be dismissed for non-prosecution. सर ये decided थे, ये अभी जो most recent है, ये 2 जनवरी 2024 का है by this very bench. ये देखिए बुनियादी सी बात है. I don't know. If you can be sued
so can you sue? I mean, ये तो बड़ा अजीब सा होगा ना. You can be sued, suffer the consequences, and you can't even appeal. And the second, I don't know. It's not. the second doesn't sound fair. The second submission would be. या तो कहेंगे you can't be sued. फिर तो वो उनको मसला खड़ा हो जाएगा. You can't file a writ against ECB. My lord, the reason why I pointed out federation and all that was that when your lordship looked at the array of parties on page 31, the only official party is the election commission. If I cannot sue, then a judgment which will relate to कमीशन जावेद हाशमी के केस में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जजमेंट जो रिट पिटीशन में फाइल हुआ. रिट पिटीशन में My lord, and it stands to reason, because in this case, if your lordship examines page 31, I am the only official respondent who is there. If I can't challenge it, then there can be no challenge, and the Peshawar High Court judgment will have finality, and your lordships will have no power under 185. Now, we could probably carve out an exception, which I don't think would be applicable, would be if an allegation of a personal nature is made against a particular member or members of the Election Commission of Pakistan, that you as Election Commission cannot challenge it, that particular member, suppose the writ of quo warranto, but you can't hold office. So naturally it doesn't affect the Election Commission of Pakistan, and that member may challenge it, but not the Election Commission. But I mean, I don't know, does it not stand to reason if you can be sued, so yes, can you sue? That is our submission. That is our submission, and the two-sided judgments were dealing with statutory bodies. Yes. So I don't know how persuasive they are. Anyways, we keep our mind open. This is an electoral body which makes all these decisions. Got it. Anything else? That's all. चलिए आइए खान साहब, आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे? आप कल शुरू करना पसंद फरमाएंगे या आज? आपकी मर्जी है. फ्रेश? You look tired. We are also tired. Your Lordship was very kind to offer that it can be on Saturday morning as well. So, हाँ, अगर खत्म नहीं हुआ हम चलाएंगे. देखें, हमारे आपको बार-बार हम ये कह रहे हैं इस अदालत से इलेक्शन हम करवाएं ना चाहते हैं. सब लोग भी ज्वाइन कर ले ना कि इलेक्शन होना चाहिए, बस जी हो. बिल्कुल बात तो वहीं पर है. हम साहब कल का आपका क्या? कल कितने बजे रखें? कल जी जैसे नहीं आपकी मर्जी है. देखिए असूलन कल के हफ्ता है ना, हफ्ते को कोर्ट बैठती नहीं, मगर हम आपकी खातिर बैठे हैं. जो टाइम आप कहेंगे हम बैठेंगे. नहीं आप बताएंगे. मॉर्निंग आवर्स बताएं. आप नहीं आप बताएंगे. आप इतनी तो हम कदर करते हैं सीनियर बुकला की कि उनसे टाइम पूछ लें. अगर आप 6 बजे कहेंगे तो शायद हम कहेंगे नहीं सर आज आगे बढ़ा दें. Let it be 9:30 then as usual. आप ठीक है, कुछ आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस. You want to make it 10? Actually, some instructions. 10 बजे कर लें. We will also put in some thing in writing, because particularly the questions that have been raised, which I'd like to. Would you want? Have you been provided with these books? मिल गई आपको? जी जो इन्होंने कुछ केस लॉ की बुक्स हैं, दे दीजिएगा मखदूम साहब इनको एक सेट. आप कल बना के लाएंगे, कल ही लेके आएंगे जो भी पेपर्स आपने बनाए. तो चलिए 10 बजे रख लेते हैं. हो सकता है फोटो कॉपी वगैरह में टाइम लग जाता है, तो 10 बजे वो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग भी हम ले सकते हैं, मगर आगाज तो कर लेना जरा, इस बात को खत्म कर लें वन वे और दी अदर. ठीक है सर. वी आर इन योर हैंड्स. Whatever you want, we will accommodate you to the extent of time. Kind of your option. My lord, may ये ना समझें कि हम आपका इलेक्शन आपको सुनेंगे और आपको भी सुनेंगे जी, मगर आपके कोई अच्छा हाँ एक बात है, कोई मजीद पॉइंट्स हैं उनके अलावा? जी मैं सिर्फ इजाफी गुजारिश करूंगा. मैं रिपीट आज नहीं कर सकते हैं, 2-4 पॉइंट्स 2-4 मिनट्स में आप कर दें, फिर इनको फ्रेश स्टार्ट मिल जाए. मैं बिल्कुल इजाजत देता, जल्दी कर. जी बिल्कुल. पहली तो गुजारिश ये करता हूँ कि सर कि आई एम कॉन्शियस. आप उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? जी करता हूँ. मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो केस प्रेजेंट किया है जी, आप रेस्पोंडेंट नंबर 10 अकबर एस बाबर.
میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو پشاور اور نو جی وی ور ناٹ سرو نوٹس اینڈ آئی کوڈ ناٹ آپ کو پتا نہیں چلا اخبار وغیرہ میں پہنچ جاتے. what I learnt was that a notice will be issued but it was not issued then. If I have to go by public notice, کیا پہنچ جاتے ہیں؟ آج ہم نے نوٹس تو نہیں کیا ہے نا. خان صاحب دیکھیں اب یہ کتنے چست ہیں, پہنچ گئے. جی جی آپ بھی تھوڑی چستی دکھا دیتے. اپنی ذاتیت تک میں ادھر تھا نہیں, ورنہ میں ضرور پہنچ جاتا. کلائنٹ نہیں پہنچا. چلیں خیر, اس پہ کچھ زیادہ وزن نہیں اس بات میں. گزارش آپ کو دیکھیں, ایک بات ہوتی ہے, ایک چیز رپورٹ ہو رہی ہے میڈیا میں سب میں, اگر آپ واقعی کیا پہنچ جاتے, چلیں اس بات کو چھوڑیں, آگے بڑھیے. میں صرف فیکچوئل گزارش آگے بڑھیے. میرا اس میں موقف صرف یہ ہے کہ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو چند آئین کی شق ہے, خاص طور پہ 17(2) وہ پڑھنا چاہتا ہوں. شق تو دیکھیں سن لیں گے, آپ کا جو اپنا اسٹیٹس ہے نا وہ بتائیے. اسٹل یو آر اے ممبر اور ناٹ؟ جی آئی ایم اے ممبر. آئی واز اے فاؤنڈنگ ممبر. آئی ہیو ناٹ بین removed from membership. No show cause ever noticed. Never resigned. I have not resigned. I have not joined another party ever. ٹھیک ہے نا, جی یہ فیکٹ ہے جی. اور جس طرح میں نے گزارش کی کہ الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ بھی ہے. وہ تو سن لیا. اب میں صرف گزارش کر رہا تھا. سوری مالوٹ, آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے. آپ کو جی میں 1 تاریخ کو جو G8 کا دفتر ہے, مرکزی دفتر, وہاں گیا. اپنے ساتھ کافی 10-20 لوگ لے کر گیا. نامینیشن پیپر لینے کے لیے گیا, کاغذات جمع کرانے کی جو بھی تفاصیل تھی ان سے انفارمیشن لینے کے لیے گیا. مجھے کوئی کاغذ یا نامینیشن پیپر یا کوئی ریکوائرمنٹ, کوئی رول پروسیجر نہیں دیا گیا. مگر وہ آپ کے ہاتھ ہے, کوئی نامینیشن پیپر کی شکل ہمیں دکھائیے. میرے پاس نہیں ہے, مجھے نہیں دیا گیا. بلکہ آپ کو نہیں دیا گیا, مگر وہ کیا لگتا شکل اس کی کیسی ہے؟ میں نے جو الیکشن کمیشن میں پروسیڈنگز ہوئی اس کا ریکارڈ جو میرے پاس ہے اس میں بھی میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی جی. اگر نامینیشن کا کوئی فارمیٹ تھا, پیپر تھا, میں نے نہیں دیکھا جی. اس میں اگلا پوائنٹ, اور یہ میں نے بڑا وضاحت میں جو اپنی میری شکایت ہے, نامینیشن پیپر ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. کچھ نہیں. اگر آپ پیج 231 پہ میری شکایت کا پیراگراف نمبر 2 دیکھیں گے. اور کو نامینیشن فارم ملا؟ میرے علم میں نہیں ہے جی. اچھا بتائیے. تو پیج 231 میں پیراگراف 2 میں میں نے واضح طور پر لکھا کہ on November 30 a press release was issued on behalf of PTI core committee stating that all arrangements have been completed for holding the intra-party elections on December 2, 2023. Copy pressly attached. The press release also stated the appointment of Mr. Niazullah Niazi as the PTI Chief Election Commissioner. The press release did not mention any other names of the PTI Federal Election Commission, nor did it share any other details regarding the intra-party election, including election rules and any regulations, detailed schedule of elections, nomination timeline and procedure, criteria for acceptance and rejection. لکھ رہے ہیں جی یہ میں نے جو کمپلینٹ دائر کی الیکشن کمیشن کو اس میں لکھ رہا ہوں. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو پتا تھی جی؟ وہ جو پریس ریلیز میں انہوں نے کہا کہ 2 تاریخ کو. کاپی آپ نے بھیجی ان کو, پی ٹی آئی کو؟ جی ان کے پاس ہے, بیکاز this forms part of the record. This was a complaint to the election commission. پریس ریلیز کون سی کہہ رہے ہیں آپ؟ پریس ریلیز جی یہ 30 نومبر کو جو پریس ریلیز ایشو کی پارٹی نے کہ ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں. لگی ہوئی ہے پریس ریلیز. پریس ریلیز سر آئی ول ہیو ٹو چیک. اگر نہیں ہو دکھا دیجیے گا. الیکشن سے پہلے ایشو ہوئی تھی پریس جی 30 نومبر کو ہوئی تھی. اچھا اور نیکسٹ پوائنٹ میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 17 جو ہے اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو جنرل ہے جو پارٹی کے حوالے سے ہے کہ لوگ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں, لیکن جو مجھ سے ریلیونٹ ہے وہ 17(2) کا میں کچھ حصہ پڑھنا چاہتا ہوں سر. ایوری سٹیزن not being in the service of Pakistan shall have the right to form. یہ پہلا حصہ ہے جو سب آرٹیکل 1 میں بھی ہے, but the second one is more important to me. or be a member of a political party. تو فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی کا بھی کوئی بھی پارٹی کو جوائن کر لینا. اور آگے ہے کہ subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of. So گزارش یہ ہے کہ کسی کا بھی کسی پارٹی کا ممبر بننا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں, تھا, آج بھی ہوں. میں نے آج تک کبھی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی, بلکہ میں یہی جدوجہد کرتا رہا کہ اس پارٹی کی اصلاح اندرونی معاملات کی حد تک ہر پہلو میں ہونی چاہیے. اور یہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, جو کہ سائٹ بھی ہوا فارورڈ فنڈنگ کا, وہ بھی اس کاوش کا ایک نتیجہ تھا. سو گزارش یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپل ہے. اچھا یہ ذکر ہوا تھا فاؤنڈنگ ممبرز کی, آپ کے پاس لسٹ ہے؟ میرے پاس پرانا آئین ہے جس پہ میرا نام ہے, میں فراہم کر سکتا ہوں. وہ کل لے آئیے گا. جی میں جی. اور وہ فاؤنڈنگ ممبرز میں آپ ہیں کوئی یا نہیں ہیں؟ سر آئی ہیو ٹو دیکھ لیجیے گا. مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ میں کل بتا دیجیے گا, اگر یا تو آج جواب دیں یا پھر کل. سر دوسرا میں 2
सेक्शन 218(3) जिसका हवाला दिया गया है उसको मैं समझता हूं कि 17(2) के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन है सेक्शन 218 सब सेक्शन 3 जी, आर्टिकल सब आर्टिकल 3 218 तो नहीं जिक्र किया। 218 it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary. अच्छा, आप आइन पढ़ रहे हैं जी? आइन का हाँ, तो उन्होंने पढ़ा जी, वो पढ़ा। हाँ। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि इंडिविजुअल मेंबर के हवाले से 17(2) को उस पोर्शन को मेरी मेंबरशिप को 218(3) के साथ पढ़ना है और फिर 219(e) के साथ भी पढ़ना है। बट एक और आपके मेंबरशिप का तो सवाल उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट किया है कि आप मेंबर नहीं जी? पेशावर हाई कोर्ट में जो पिटीशन है वहां पर उन्होंने ये कहा कि इज नॉट अ मेंबर, और अभी भी शुरू में दिखाइए किस पैराग्राफ में कहा है। Respondents 215 are not members of PTI. Page 36, paragraph 11. Page 36, paragraph 11. जी. That the respondents 2 to 15, I was number 3 in that, are not members of PTI, nor contestants of any intra-party elections that have. ये तो एक जनरल डिनायल है। इन्होंने ये कहा। सो मेंबरशिप के हवाले से जनाब ने पूछा, हम इनको भी ये कह देते हैं कि किस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं। जी जरूर, वो भी कल जवाब दे देंगे। और आप दिखाइए कि आप उसके वो क्या उसको कहते हैं, फाउंडिंग मेंबर को क्या कहेंगे? फाउंडिंग मेंबर ही था मैं, वो उसका सबूत दिखाइएगा। जी मैं अगला पॉइंट मैं आर्टिकल 222 का हवाला भी देना चाहता हूं सर। आर्टिकल 220 जी, आइन के सब एफ में आर्टिकल 222 जी आर्टिकल 222 ये कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर सो मेनी थिंग्स। एफ में कहता है ऑल अदर मैटर्स नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउसेज द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यहां पर रुकना चाहता हूं कि ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज में अब 2017 का जब कानून आ गया है और उसमें इंट्रा पार्टी एक एम्फसाइज किया गया है कि एक अहम तरीकाकार है जो अंदरून में पार्टी होना चाहिए, तो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउसेज नहीं हो सकती अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ सही क़यादत पार्टी में नहीं आएगी और फिर वो पार्टी ना फैसला करे कि कौन कौन से मुस्तहक लोग हैं जो नुमाइंदगी अवाम की करेंगे। आगे बढ़िए। और इसका जो एक्सेप्शन है सर, बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और अब्रिजिंग एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कमिश्नर और द कमीशन। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ऑल्दो हमारे पास डिटेल्ड रीजंस नहीं है अभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट को भी ये इख्तियार ना होगा कि वो कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन करे जिससे कमीशन के इख्तियारात में कमी आ रही हो, और जो उसकी ड्यूटी टू कंडक्ट अ फेयर इलेक्शन है और जो 218 का बेंचमार्क है। पेशावर हाई कोर्ट क्या नंबर था? WP 6। वो मालूमात करनी है जरा रजिस्ट्रार से कि वो ऑर्डर आ गया है, और ऑर्डर आ गया है तो वो मंगवा लीजिए, और जो नहीं आया तो कब तक आ रहा है ये भी पूछ लीजिएगा। जी सो ये वो इजाफी आईनी शिक है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आगे बढ़िए। अब मैं सर इलेक्शन एक्ट पे आना चाहता हूं। जी आ जाए। इंडिविजुअल कंप्लेनेंट के हवाले से सेक्शन 15 एक नई शिक है जिसमें कंप्लेंट्स की प्रोविजन, सेक्शन 15 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2000 कंप्लेंट्स। जी कंप्लेंट्स, ये पहले रोपा में नहीं था। ये 15 के कहता है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय। हो गई बात, अगली बात। जी इसके बाद सर जो सेक्शंस है मैं 200 की तरफ आता हूं। 200 में मैं 200 सब सेक्शन 4 की तरफ निशानदाही करना चाहता हूं कि notwithstanding anything contained in subsection 1 a political party shall not, और इसका सब ए जो है propagate any opinion or act in a manner prejudicial to the fundamental principles enshrined in the constitution. So मेरा जो proposition है for consideration of the court वो ये है कि ये fundamental
प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और मुस्तकम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में बने ताकि जो हाउसेज हैं वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो सकें, जो अवाम की प्रॉपर नुमाइंदगी कर सकें जी। इसके अलावा सर जो आई विल समराइज माई प्रोपोजिशन के कॉन्सिक्वेंसेज इंट्रा पार्टी इलेक्शन होल्ड ना करने के 3 हैं जो इन्विजिड हैं इलेक्शन एक्ट में। पहला सेक्शन 2025 में है जिसका एनलिस्टमेंट से ताल्लुक है। किससे? एनलिस्टमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्ट्रेशन जी, रजिस्ट्रेशन या एनलिस्टमेंट। व्हाट इज द वर्ड यूज्ड इन द एनलिस्टमेंट? एनलिस्टमेंट, ये मैं गुजारिश करूं। एनलिस्टमेंट जी, एनलिस्टमेंट। इसमें यह है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एनलिस्टमेंट के लिए आती है तो सेक्शन 202 ये कहता है कि आपने कुछ डिक्लेरेशंस या कोई सर्टिफिकेशंस देनी है, उसमें भी 209 का जिक्र है। तो अगर एक पार्टी जो 209 किसका? आइन का? इलेक्शंस एक्ट, जिसमें सर्टिफिकेशन है कि जी हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। कहने की गुजारिश ये है कि अगर कोई पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती ही नहीं है तो वो तो एनलिस्ट होने की भी एलिजिबल नहीं है। इन्होंने कराया। मैं आपको नहीं ये कह रहे हैं हमने कराया, अब कोई कंटेस्ट ना करे, हम कोई जबरदस्ती तो नहीं करवाएंगे उसको कंटेस्ट। बिल्कुल सही। मैं सिर्फ ये गुजारिश, इलेक्शन खत्म हो जाता है इस बात पे? जी मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश ये कह रहा हूं कि 3 कॉन्सिक्वेंसेज हैं विज़ावी इंट्रा पार्टी इलेक्शन। एक पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ये कि पार्टी की एनलिस्टमेंट भी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है जिसका जिक्र हुआ कि अगर सर्टिफिकेट फराहम नहीं किया जाता तो फाइन इंपोज कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 2085 में है। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस है इनएलिजिबिलिटी ऑफ अ सिंबल। तीसरा कौन सा सेक्शन है? जी वो सेक्शन है 2154 और 5। 2115 सब सेक्शन 4 और 5। सो गुजारिश ये कि फोकस जो है पार्टी का वो तीसरे वाली कॉन्सिक्वेंस पे ज्यादा रहा। सिंबल नहीं मिला तो नुकसान आपको भी नहीं होगा? आप भी तो मेंबर है ना पीटीआई के। फाउंडिंग मेंबर है आप, फाउंडिंग मेंबर। आई एम गिल्टी ऑफ फॉलोइंग द लॉ and do not worry about the consequences. We are just asking a question. मेरी जात पे नहीं जी, मुझे तो फायदा होगा अगर पार्टी मुस्तहकम होगी। आप असूलों पे लड़ना चाहते हैं जी। आई एम गिल्टी ऑफ फॉलोइंग द लॉ। अगर उसका कोई नुकसान है तो ठीक है, हम सवाल पूछते जाएंगे, आप जवाब देते जाएंगे। जो फोकस रहा है आर्ग्यूमेंट का जो बज़ाहिर लग रहा है वो 3rd कॉन्सिक्वेंस पे है। सो फुल पर्सपेक्टिव ये है कि इससे अखज़ ये किया जाता है कि यही मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, सब बातें चली गई सिंबल पे। जी जी, वो तो अगर इलेक्शन सही हो गया तो सब कुछ मिलना चाहिए, वो कॉन्सिक्वेंस है मेरे हिसाब से। अब सुनेंगे खान साहब को कल क्या कहते हैं। बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस बीइंग नया, तो मेरे ख्याल में सिंबल का फोकस है, बट कानून की मंशा ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजिम है। कानून की बुनियादी मंशा है कि इलेक्शन कराओ जी, साफ शफाफ कराओ, फिर बाद में चीजें मिलती जाएंगी या नहीं मिलेंगी तुम्हें। वो तो एक तरह से सजा या जजा या सजा वाली बात आ गई ना। जी बिल्कुल। अब इट इज नॉट फॉर मी, कंप्लायंस वाली बात अलग है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा शिकवा जाती तौर पर एज ए कंप्लेनेंट ये है कि मुझे मौका नहीं फराहम किया गया, जिसकी वाज़ेह निशानदेही 2 सेक्शन 208 सब 2 में भी की गई, जो हवाला दे दिया गया। मैं उसको रिपीट नहीं करता कि हर मेंबर को ये इख्तियार है कि उसको इक्वल प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू कंटेस्ट इलेक्शन। और कोई बात? सो ये वो अजाफी प्रोविजंस हैं। आप इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? पीटीआई शायद मुझे तंग कर रही है सर, मैं तो अपना हक की खातिर लड़ रहा हूँ। तो ये आपकी जो कब से शुरू हो गई है? 2014 नवंबर से जी। उस वक्त क्या हो गया था 2014? उस वक्त पार्टी में फंड्स का मामला था सर। मेरा ख्याल था कि गैर उसमें प्रोहिबिटेड सोर्सेज है, फॉरेन फंडिंग तो एक जर्नलिस्टिक टर्म बन गई, लेकिन कानूनी मंशा ये थी कि प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे नहीं आने चाहिए। और प्रोहिबिटेड सोर्सेज क्या थी? वो ये थी कि मां सवाए इंडिविजुअल सिटीजन्स के और कोई पैसे पार्टी में नहीं दे सकता कानून के मुताबिक। तो मेरा ये कहना था कि हाँ, citizens of Pakistan, wherever they may be, can contribute to the political party, but who is not a citizen or somebody who is a corporate body, even a local company for that matter, cannot contribute to the funds. तो मेरी तो कंप्लेन उस नौयत की थी कि शफाफियत है। Companies cannot contribute. The law said जी it could not. Which section? This was section 5 and 3 of the PPO, and this is also now in sections. खैर ये इसमें इशू नहीं है, बट इट वाज स्पेसिफिक प्रोविजन है जी कि चलिए ठीक। सोर्स क्या पॉइंट। सो मेरा इस मामले में अभी यही गुजारिश है
کہ جو الیکشن تھا وہ بالکل شفاف طریقے سے نہیں ہوا. ایک آپ کو چپتا ہوا سوال پوچھ سکتے ہیں؟ آپ خود کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے؟ خود ہی کھڑے ہیں جی 2014 سے. اچھا. اور اس میں آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں اجازت ہمارے ذہن میں جو بات ہوتی میں تو کہہ دیتا ہوں. آپ کی اجازت ہے تو میں بھی کین اسپیک فریلی. یس. 2014 میں جب میں نے کمپلین کی تھی اس وقت جو بھی معاملات محرکات تھے میری کاوش جاری رہی. آئی فاٹ سنگل ہینڈڈلی اگینسٹ the mindset that respectfully prevailed at the election commission, the mindset that was reflecting the government of that time and the powers that be. So I have stated. کس کی حکومت تھی؟ جی حکومت تو ایک ہے جو ہر وقت رہتی ہے اور ایک حکومت ہے جو بدلتی رہتی ہے. تو میں تو ریگولیٹری اسٹرگل اور سیاسی اسٹرگل اور پرنسپل اسٹرگل کو پرسسٹنٹلی ود سیریس مائنڈنس پرسو کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی کرتا رہوں گا. جو بھی آؤٹ کم ہو وہ تو جناب کے ہاتھ میں. I have nothing further to add. ٹھیک ہے. بٹ آپ کو ڈاکومنٹ لے آئے گا. جی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر کل انشاءاللہ 10 بجے. خان صاحب ٹھیک ہے 10 بجے. وہ الیکشن کمیشن والے بھی لے آئے ہوں گے نا فائل. آپ نے بولا تھا فائل. وہ فائل آپ لے آئے الیکشن کمیشن کی فائل, اوریجنل فائل. وہ ہمیں ذرا چھوڑ دیجیے گا. اوریجنل فائل لائے ہیں اس میٹر کی. نہیں رائٹ کا کیا مطلب لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں؟ نہیں ہاں چھوڑیے نہیں لے جائیے, گم بھی ہو سکتی ہے. کل لے آئیے گا اگر لائے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز دیکھنا چاہیں ہم صاحب تو وہ دیکھ لیں گے. تو اگر ہاں اوریجنل فائل جو بھی اس معاملے کی ہے وہ لاہور والی, پشاور والی, الیکشن والی, مطلب الیکشن سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں. ٹھیک ہے 10 o'clock. اس میں ہاں آرڈر لکھ دیتے ہیں آج کا شارٹر سے. ہاں ہاں اوکے کل کا بینچ بھی نکلوائیں, ایشو کر دیں. ہاں اس میں لکھیں this civil petition for leave to appeal assails the order of the assails the order. کدھر کیا آرڈر پیج آرڈر کس پیج پہ ہے؟ ہاں assails the order dated 10 January 2024 of the Peshawar High Court Peshawar, whereby it set aside the decision کہیں گے یا ججمنٹ کہیں گے, the order of the Election Commission of Pakistan within bracket ECP dated 22 December 2023 and full stop and issued certain directions. The Election Commission, we are informed that the detailed reasons have not as yet been provided, but since the matter is time sensitive and as the elections, general elections are scheduled for 8 February 2024 in Pakistan, this matter requires immediate attention. Also, accordingly, we proceeded to hear the matter. Mr. And heard Mr. Makhdoom Ali Khan and heard learned Mr. Makhdoom Ali Khan, senior ASC, full stop. Mr. Learned senior ASC, Mr. Hamid Khan has filed caveat. اچھا وہ علی ظفر صاحب ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے ادھر سے, ان کو ریکویسٹ کر دیجئے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی. تو وہ بے شک فوگ کے بعد پہنچے, کم از کم آپ کو سن لیں. تو وہ اگر کوئی بھی ایڈریس کرنا چاہے تو ان پرسن آ کے کر لیں. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, خالی سمپل نوٹس. اچھا ادھر کون اٹارنی جنرل آفس بھی چودھری صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے, ہیں وہ ہوں گے, وہ 27 کی ضرورت نہیں ہے. آپ
इसमें पार्टी तो नहीं है, मगर अगर कोई सवाल उठ गया तो हम शायद पूछ लें आपसे। हाँ ओके 27 की जरूरत नहीं है, वैसे डीएजी होता है ना, जाहिर है फेडरेशन और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो जरूरत पड़ी हम आपसे पूछेंगे, मगर अभी मैटर तो लगता नहीं है आपसे कुछ पूछें। बाहर फिर भी आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं अगर कोई आप करना चाहें। आप तो सुबह से बैठे थे, सुन रहे थे ना सब कुछ, ठीक है। तो आपका हम वीकेंड भी खराब करना चाहते हैं। मेरी नहीं है। अच्छा क्या लिखा है? And states that and has raised preliminary legal objection with regard to the maintainability of the instant petition, and states that he will expand further thereon tomorrow. Full stop. To be treated as parter to come up tomorrow at 10 a.m. The office to inquire from the Peshawar High Court whether the detailed reasons have come, and if not, when are they expected? क्या कहा उन्होंने? ठीक है, ठीक है। Anything else you want noted? Anybody? चलिए, thank you everyone for spoiling our weekend. बुरा न माने, ऐसा न लाइट नोट। आइए, थैंक यू जी, चल।